Hello, and welcome to A for Arsenal. Sorry, I was planning to stream a bit earlier, yeah, but workout, showers, all that crap. And we are here, bhai. Kaise ho? Hello, welcome to another stream discussing the UCL draws. So the way this stream is going to go is I'm going to talk about the draws a bit. Let the audience join in. लोग थोड़े से आएंगे, अच्छा लगेगा. थोड़ी सी भीड़ भाड़ होगी, and then I'm going to post the link to this stream in my Discord. Now, if you are not a member of Discord, आप अगर member हैं, आप जा सकते हैं on the members only tab. You can check out the latest members only post. उसके comments पे किसी ने Discord link डाल दिया होगा. You will be able to join the Discord, link your YouTube account, and then you can click and you can join and you can have your own say, because this is going to be about you guys, the audience, especially the members here, who will have a say on what they want to say. Now, how will it go? A lot of people get gifted memberships who I don't know as much, and there are some members who I know a lot more. तो जिन लोगों को मैं जानता हूँ, they have the option of you know, shutting their camera off and speaking, because not everyone is camera heavy. But if you are a new member, or if you're somebody who I am not familiar with, I'm going to ask you to turn on your camera. You can join either through a PC or a phone, and then I will ask you to turn on your camera and then speak. This is purely for safety reasons. इस stream पे मैंने latency भी डाली हुई है, so what you see on screen is 30 seconds after. Yeah, I'll share it in football talks, Karthik bhai. What you see is 30 seconds after. That is again purely for security reasons, because as you all know, Ankit bhai tried this a while back. It's been a year or something now, and somebody played adult content on screen and his channel got banned, and it is what it is. um, but इसलिए मैं सबसे पहले I am doing this stream first with my Discord members only, because I have at least some level of, well, parasocial relationship with them. I know them, I've spoken to them, I know the kind of people they are. General public के साथ थोड़ा मुश्किल होगा, because there are always haramis in the chat. Yes, exactly. This is exactly इसलिए मैं सिर्फ members के साथ कर रहा हूँ, and मैं कैमरा ऑन करवा के कर रहा हूँ. मैंने स्ट्रीम पे लेटेंसी भी डाल दी है, एंड मेरा हाथ होगा सीधा रिमूव बटन पे जैसे ही मुझे थोड़ा सा डाइसी लगेगा. I know it could be frustrating, but it's about the channel. But it's also, I trust my members. I trust my members enough to bring them on the stream. Now, like I said, first we'll talk a bit about the draw in general, and then we will share the link and everything. Did the upcoming FA Cup match play important for Arsenal and Bayern match? Kya, Kakashi, I don't understand what you're trying to do. If it's a joke, it's too high level for me. But nice. अपना Discord link दे दो. Unfortunately, if you want to join the Discord, you'll have to join the membership, any tier, and you get access. Yes, exactly. अपने में ही सांप निकल जाए यार, अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता. शांतनु का कैमरा खुलवाना, शांतनु ना दिखा दे कोई. It is what it is. All right. So, how are your feelings now? It's been what, 24 hours after the draw. How are you feeling? जिन लोगों की टीम क्वालिफाई कर चुकी है for the quarter finals. If you're a Bayern fan, how are you feeling? If you're a यार थोड़ा सा वेट करो. I understand it, but थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. Unfortunately, तक्षिल भाई, I can't rush it for one person or two people. Stream is the way the stream is. And अगर इस बार आप नहीं कर सकते तो no problem. Next time आप join कर लेना. So, if you're a Bayern fan, how do you feel about the draw? If you're an Arsenal fan, how you feel about the draw? If you're a Real Madrid fan, how do you feel about the draw? If you're a City fan, Dortmund fan, Barca fan, PSG fan, how do you feel about it? Tension हो रही है, says Takshil bhai. Of course, Takshil bhai, of course tension होगी आपको. City versus Madrid, man. मजा आ रहा है. Damn. The only thing यार, जिसने इस्माइल भाई ने बिल्कुल सही बोला है, the only thing which bothers me is City, Madrid and Arsenal Bayern is on the same day. That pains, man. Feeling good, we got Arsenal easy draw, to be honest, says Kane Trump Tate. We. Who is we? Who is we? भाई 2 मंथ से आपके लाइफ पे आता हूँ, बट चैट नहीं करता उतना. बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्वार्टर्स. थैंक यू सो मच टोमी ओकासा.
Good luck for the Hashira training arc as well. बहुत मजा आ रहा है. As a Madrid fan, feeling pumped, said Xander. Xander, do you think you're gonna get him? You're gonna get City this time? Because stories हर जगह हैं यार. Stories हर जगह हैं. Left back position का ही डर है against Bayern. Arteta might play Jorginho to support left back. देखते हैं यार. लेफ्ट बैक पे तब तक आई थिंक टोमियासु, टिम्बर, किवी और जिनचेंको ऑल फोर विल बी फिट मैन. As a Bayern fan, easiest tie we could play, says Renesu. I can understand why you're a Bayern fan. What's Zaire Emery cook our midfield? Mbappe cooking. Ek second, guys. Yeah, doable, but excited, scared for a few hours, but now feeling good. You are going to go through IDK Madrid. Well, all those injuries and Carlo tactics. See, I think you guys just have. I think you guys are just scared of Carlo Ancelotti more than, and I think ये आप लोगों का RR है. That's it. That is it. I would love a reverse fixture at home, says YK. I understand, man. I understand completely. You would have loved a return fixture at home. But look, man, if we had the first leg away and we got completely smacked, then no matter what we did, look, there are two ways to go about it. Of course, they will have an advantage in the return fixture if it goes to extra time or pens. They have the advantage there. But you also have a way to look at it that you have the ability to control the tie in the first leg. You know your fate, what you have to do in the second leg. अगर आपको एक क्लीन सी विक्ट्री मिल जाती है in your home leg, you can tactically adjust to the second leg. Fair enough. If you are drawing in the home leg, then you know you have to play aggressive in the second leg, and you can adjust and you can learn. And yes, of course, playing at the Allianz is very tough. Like I said in my video today, check it out if you haven't. सबको एक साथ नहीं बुलाएंगे, वन वन एट अ टाइम. वरना एक साथ बुलाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा. किसी को कुछ समझ नहीं आएगा. नाउ अगर एक नहीं तो फिर टू एट अ टाइम कर सकते हैं. इट इज व्हाट इट इज. जैसे जैसे आकर्षण ने कहा, इट इज व्हाट इट इज. एंड सो you can control the tie in the first leg and then you can adjust and play accordingly in the second leg. City ने जो treble जीता था उसमें भी they only managed a draw at the Allianz. So it's a tough fixture for Arsenal for sure, man. For sure for Arsenal, it's a tough fixture. You have to respect Bayern's legacy. You have to respect their history. You have to respect the fact. And if you remember, if you've been following this channel for a while, when I was making my predictions for the Champions League, I said they are top 3 or if not top 2 favorites to win the Champions League, no matter what anyone says. No matter what anyone says. And we are essentially in a bracket facing the top 3 teams in this Champions League. So respect Bayern's legacy, respect their heritage, respect what they've done in the Champions League. They have stars for a reason on their badge. Okay, respect them, but don't fear them. And that's the whole point. तक्षिल भाई, आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा. तक्षिल भाई, it is, I will send the link in the Discord. Whoever joins, I will make an order. We can't do priorities and everything, right? So I'm sorry. I can't make super adjustments just for one person. I appreciate your membership, but Takshil bhai, आपको भी थोड़ा सा understand करना पड़ेगा. Hello bro, I recharged my data pack and I am back. Cosmic Chat, welcome back. Welcome back. Arsenal final. No. No. Listen, one step at a time. Before even Bayern, you have to try and beat City first in the Premier League. फिर हम बात करेंगे Bayern की. Why Bayern fan cannot buy ticket at the Emirates? So, Kakashi, the way it works is, first of all, Bayern fans were banned because they threw flares at the Lazio game. तो उनको UEFA ने ban कर दिया, so they can't visit as the away fans. Now Arsenal की ticketing इतनी demand में है पिछले 2-3 सालों से that we have made sure that only Arsenal members can get tickets. जैसे जर्मनी में होता है, you can buy ticket as a member and a non-member. England में ऐसा नहीं है. You have to be a member to get tickets. Now, if Bayern fans want tickets, they will have to buy it off Arsenal fans. And it will be very expensive. I know for a fact London में कितने scammers हैं, and I know Arsenal tickets कितनी expensive हैं. For the first time in 14 years we're in the quarterfinals, it will cost a very pretty penny for you, any German fans, to get tickets to the Arsenal game. Even if they get it, I am not sure वो कितने लोग एक साथ होंगे. They will be dispersed off. So I don't discount the fact that there will be some Bayern Munich fans who will be able to attend the game, but it will be very dispersed. मुझे नहीं लगता कि एक small section of Bayern fans organically create हो जाएगा. So yeah, there will be some tickets which will be resold. There will be some Bayern fans in the stadium, but मेरे हिसाब से
होगा. ब्रो मॉड्स के लिए डिस्कॉर्ड नहीं है क्या? नहीं इस्माइल भाई, इट्स जस्ट फॉर मेंबर्स अनफॉर्चुनेटली. Bro, the only thing we lack is mentality, nothing else. And cosmic chat, the thing is, you can't fast track mentality. Real time में mentality बनेगी. That Porto game builds a little bit of mentality. This Bayern game will build a lot of mentality. Imagine if we go through Bayern. जो लोग कहते हैं आर्सेनल में मेंटालिटी नहीं है, और मेंटालिटी आ जाएगी, एंड वी माइट लूज अगेंस्ट बायर्न, वी माइट लूज इन द नेक्स्ट राउंड, वी माइट लूज इन द फाइनल्स. एवरीथिंग विल बिल्ड दिस टीम, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि चलो इस सीजन हम बायर्न से भी नॉकआउट हो जाते हैं. Everyone's expectation for Arsenal at the beginning of the season was quarters तक Arsenal को जाना चाहिए. We've reached that expectation. Now I think we should go ahead without fear. Right? मेरे को पता है the team is good enough that it will be at this stage next year for sure again. एंड नेक्स्ट ईयर अगर हमें बायन मिलेगी, जैसे लास्ट ईयर हम पोर्टो से नॉकआउट हो गए थे, राउंड ऑफ सिक्स, सॉरी स्पोर्टिंग से हो गए थे. इस साल पोर्टो मिली, लोगों को लगा था कैसे करेंगे, फर्स्ट लेग में हार गए, फिर से क्रम्बल कर जाएगी, निकल गए, पेनल्टीज पे निकल गए. क्योंकि बट दैट्स हाउ इट मैटर्स, राइट? नोबडी इज मेकिंग अ हिसी फिट दैट देखो तो मड्रिड ने तो सेकंड लेग में लाइप्जिग के अगेंस्ट ड्रॉ किया, फर्स्ट लेग में गोल डिसला हो गया. नोबडी इज सेइंग मड्रिड इज lacking mentality. Everyone is saying Madrid won. They found a way to win, and that's correct. Same way with Arsenal. Arsenal found a way to win, and that it is what it is. For City versus Madrid, आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन. 3 साल में फिर से ड्रॉ हो गया है, क्वार्टर फाइनल्स में हो गया है, एक टीम निकल जाएगी. देखो यार, इट विल बी अ वेरी टाइटली कंटेस्टेड गेम. फर्स्ट लेग सांटियागो बर्नाब्यू में है, एंड अगेन आई एम सेइंग इफ मैड्रिड कंट्रोल दैट टाई इन द फर्स्ट लेग, नो मैटर व्हाट हैपेंस, सेकंड लेग में दे आर मोर देन केपेबल ऑफ गेटिंग अ ड्रॉ. दैट बीइंग सेड, एट द एटिहाद सिटी का पल्ला हमेशा भारी रहेगा. दिस इज अ टीम जहां पे इंजरीज नहीं है. दिस इज अ टीम जहां पे सस्पेंशंस पे नोबडी इज देयर ऑन येलो कार्ड्स एज वेल. दिस इज अ टीम जहां पे मैनेजर एक पूरी सिंक कर रहा है अपनी टीम के साथ, एंड एवरी प्लेयर इज स्टेपिंग अप. डेब्रोइना, हालैंड, फोर्डन, एल्वारेज, बर्नार्डो, रॉड्री, ये सब लोग होंगे यार. एंड सिटी सिटी थोड़ी सी हैवी मेरे को लग रही है. सो राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, my feeling is that City has a slight edge in this fixture. But listen, this is the Champions League. It is Madrid's competition, man. It is Madrid's competition. I will root for Madrid in this Champions League tie. I will hope that Madrid actually pulls through something. Yeah. Will they do it or not is a completely different question. But if there is any team I expect to beat Man City very comfortably, it is Real Madrid. जैसे काफी सारे क्रिएटर्स ने भी कहा है, Man City don't look invincible, but they don't look vulnerable either. That's the thing with Man City. They can turn it on anytime. And same thing with Madrid fans जैसे कह रहे हैं, it's not about Pep that I'm worried, it's about Ancelotti. I don't think that's a valid criticism anyway. The guy knows what he's doing and he can coach a winning game anyway. Madrid की सबसे बड़ी advantage ये है that they have players that can turn it on and change the game in moments. Rodrigo, Vinicius, Jude, they've added Jude to that team. And of course, they might be missing Benzema, but they have so many players. भाई Madrid is a very well balanced squad, but center backs में थोड़ी सी problem है. And that is it. I am not member why I'm watching this, because members will be a part of the discussion. The stream is public. It's about resilience. Both teams have enough resilience. Both teams have enough resilience. अगर कोई एक टीम में resilience नहीं होती, दोनों टीम्स की नहीं फट रही होती. You look at any Western Indian creator का reaction. Madrid fans are sweating. City fans are sweating. Both of them did not want this, but it is what it is. Man City have to play 4 games in 10. अरे वकार भी है यहाँ पे. कैसा है वकार? Nice to see. I'm sorry if I missed any of your chats. I was just in a monologue. Man City have to play 4 games in 10 days, including the last one in the Bernabeu and the penultimate game in London. Do you think this will affect things? Yeah, Tasir, it will affect any team, but the team it will affect the least is Man City, because they have, भाई देखो बंदे ने, Pep Guardiola ने, Ruben Diaz, and I know some people will say Ruben Diaz has been crap this season, but he is one of his strongest defenders. He is one of the most expensive defenders, and the guy benched him for that Liverpool game and still managed to get a draw. And that's the whole point. That guy can rotate, switch, turn things without it affecting too much. वो लिवरपूल थी. कोई और टीम होती लिवरपूल की जगह, City would have won that game. And that it is what it is. Bellingham at Etihad is key.
I'm good यार राहुल, कैसे हो? आशुतोष says if Atletico reaches the final they're going to win it. यार ये सारी चीजें देखो, मैं तो कहता हूँ ऑनेस्टली सेमीफाइनल के ऑनवर्ड्स कोई भी टीम जीत सकती है. Who expected Inter to reach the finals last season? Everyone's dark horse was Napoli last season, right? Because of Osimhen, Kvaratskhelia, their manager, Lobotka, Zambo Anguissa, all these guys. तो सबका dark horse Napoli थी. Inter पहुंच गई final में. So we don't know these things, man. Everyone thought Inter is a dark horse. Inter got eliminated by Atletico, and now everyone's dark horse is Atletico. They are definitely in a very strong position. But let's see, yaar. Anything can happen. Anything can happen. Is Bayern versus Arsenal going to be high scoring? यार मेरे हिसाब से Allianz वाली leg will be very high scoring. इसलिए आर्सेनल को एटलीस्ट 3 गोल का लीड तो लानी पड़ेगी एमिरेट्स पे, मेरे हिसाब से 2 या 3 गोल की. Nothing, boy. We are just discussing the ties, and now soon, maybe in like another 5 minutes, we're gonna get the members in. For Barca versus PSG, my thoughts are, uh, I think it's a very well balanced tie. I think just because of the general dislike towards PSG, मेरे हिसाब से, yes, इस पे हम बात करेंगे आशीष. I start your comment. I think general dislike of PSG की वजह से a lot of people are underestimating PSG. I think आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा that not only do they have Kylian Mbappe, who is a great talent, there is also Dembele, who of course hasn't performed as well as he could. They are game changers. There is Zaire Emery, who is a game changer in the middle. There is Vitinha, who is a very silky and technical player. एंड मेरे हिसाब से एक प्लेयर जिसको कोई सोच नहीं रहा है, बहुत कम लोग सोच रहे हैं इनफैक्ट, इज ब्रैडली बारकोला. दैट गाय इज लाइक अनदर जावी सिमोन्स. Super young, super technical, amazing. That guy is going to be very crucial against Barcelona because Barcelona have Kubarsi, they have Araujo, they have Kunde. Um, Left back पे maybe Cancelo will play. Barca have big game players in Gundogan. Maybe Frankie, Pedri में से कोई भी आ जाएगा या दोनों ही आ जाएंगे. Ferran will have a role to play. Rafinha might have a role to play. Lamine will have a role to play. Lewandowski will is a big game player. So it is pretty balanced. I think अगर आप अपनी PSG hate को एक तरफ रखोगे, you will see this PSG team is actually a very good team. And आप context भी देखो. Look, Barcelona, no matter how the La Liga campaign is going, they will try to finish as close to the top, if not top. They will try and give it their all in the La Liga, right? In the Liga, not La Liga. In La Liga. Meanwhile, Paris have already pretty much wrapped up Liga. दे कैन, जैसे यश भी कह रहा था कल, काफ़ी सारे क्रिएटर्स कल कह रहे थे, आई थिंक दिव्यांश ने भी कहा था, दैट PSG can afford to rest Mbappe for this. They can just unleash Mbappe. Ayan कह रहे Felix भी बोलो. He could be an underrated player in this, man. And look, I don't feel confident about Barca. Chrissy Kunde will cover Mbappe. Cancelo won't be able to handle the left flank. Look, bro, anything can happen because the legs are still so many weeks away. So many. Ninth April, huh? So it's still like just under a month. 3 weeks precisely, to be honest. So anything can happen, any injuries can happen. If Chelsea and Liverpool can go toe to toe against City, RMA can definitely do more than that. If not, the fans will blame Carlo for sure. Yeah, the thing is, Ashish, I agree with that point. On principle, I agree with that point. But no two games are the same. For example, Liverpool versus अगर आप Man City वाला game जो अभी recent हुआ, आप देखो, Liverpool played so well. But then you think about Liverpool versus Forest, and it took a last minute winner for them to break down Forest, right? No two games are the same, and you will have to see how Pep plays. If Pep is more interested in neutralizing Real Madrid, or if Pep is more interested in dominating Real Madrid, if Carlo is more interested in playing it, making it a moments game, or if Carlo wants to go toe to toe with City. बहुत सारी चीजें यार, इन चीजों पे फर्क पड़ती है. No two games are the same, but no, I take your point that Chelsea and Liverpool करती हैं. But I think एक लीग मैच में जहां पे ड्रॉ बिकम्स अ पॉसिबिलिटी, एंड एक नॉकआउट मैच में जहां पे 2 legs होती हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. अगर सेकंड लेग एटिहाद पे है, यू माइट एक्चुअली सी सिटी बी अ लिटिल मोर पैसिव एंड टेकिंग द गेम टू एक्स्ट्रा टाइम, जहां पे उनको पता है बिकॉज ऑफ देयर डेप्थ उनके पास एक एडवांटेज हो सकता है, और मे बी इफ इट गोज टू पेन्स और वट एवर. बाबा ने आज अपनी सुबह वीडियो पे एक बहुत अच्छी बात बोली थी. आर्सेनल, जैसे सब लोग कह रहे हैं, नीड टू डिसमेंटल बायर्न म्यूनिख इन द फर्स्ट लेग. That's true because no team has won 2 penalty shootouts in a single UCL campaign. So we have to
We have to think about history as well in that scenario. Anyways, and of course, the final tie है Bayern Munich, oh sorry, Borussia Dortmund versus Atleti Madrid. भाई Atleti ने बहुत अच्छा करा. They worked really hard to beat Inter out. It took penalties. But look, nobody is saying Inter, Atleti तो just barely penalties पे निकली है. I'm saying don't write off Dortmund इतने आराम से, right? मानस was saying दक्ष बहुत उड़ रहा है. उड़ेंगे भाई, we are in the quarter finals. अब नहीं उड़ेंगे तो कब उड़ेंगे? We have pretty much क्या था? Essentially, it was Arsenal had to compete for the title again. We are competing for the title again. Arsenal have to go at least to the quarters in the Champions League. We are in the quarters of the Champions League. We have, I would say, as far as everyone's expectations go, we have achieved a lot. ठीक है, this is still a young team and it'll only get better. And so you should be, man. You should be proud of what your team has done. Screw what other people think, yeah. Other people don't rate Arsenal. Other people think Arsenal is this. Other people think Arsenal is arrogant. Everyone is arrogant about their own team, man. Don't ever be scared of flaunting your success. Bhai, if you are getting through to the quarters and you're competing with the Premier League, you should be proud because so many teams can do it, but they're not doing it. Simple si baat. Anyways, don't write off Borussia Dortmund simply because they are a very solid defensive unit. 5 goals उन्होंने concede करे, joint lowest with Arsenal. They concede the least XG per shot in the Champions League this season. They don't have enough to fight for in the Bundesliga, just like Bayern Munich. I will say that you have to also look at Borussia Dortmund because look, they came out from the group of death as table toppers or group toppers. They beat PSG, they beat out AC Milan, they beat out Newcastle United. And yes, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, but group of death को top करने is not a मजाक, right? Round of 16 में who did they play? PSV. PSV is unbeaten in the Dutch league, right? They're scoring for fun. They haven't lost a game, or I think they must have lost one game by now. But Borussia Dortmund को भी write off मत करें. Of course, Simeone has never lost a home game in the Champions League. But if Dortmund is good enough to get a 2-0 lead or a 2-goal margin at home, they don't need to beat Atletico at home. That's it. सिर्फ उनको करना है एक अच्छा सा ड्रॉ निकालना है at the Wanda. Anyways, so the point is, don't write off Dortmund as well. I still think Atleti might go through. But that's only because मेरे हिसाब से personnel wise Atleti is a little bit superior than Dortmund. But Dortmund as a team can stifle any other team. Any other team. डर क्लासिकर होगा फाइनल में just like in 2013. Yeah man, हो सकता है. अगर आप देखो तो कुछ भी हो सकता है. होने को तो it could still just be Real Madrid and PSG. That is a very attractive. It could be Real Madrid versus Dortmund. It could be Bayern versus Barca. Anything can happen. Look, we can all make up predictions, but it'll be till then सिर्फ predictions. Anyways, मैं जा रहा हूँ अभी Discord पे. So I am going to post the link on Discord. Now, the way it will work is one by one people will come. Is because I can control people that way ज़्यादा आसान से. I can see what they're doing and I can remove them if I think something is fishy. Why is it not happening? एक second, boys. Copy. Right. So मैंने डाल दिया है Discord link StreamYard वाला. People can join. Now, if you are joining on the Discord, hello Bipra, kaise ho? If you're joining on the Discord, join in with your Discord name. For example, if your name on Discord is Shamu, join it with Shamu. If your name on Discord is Tracy, join it with Tracy. So, I am going to pin this message as well. And we are now going to hear from the members of the channel. नहीं, दो लोग नहीं लेंगे. बिकॉज अगर दो में से एक ने कुछ गड़बड़ कर दी मुझे नहीं पता लगेगा कौन है सो आई कैन ओनली कंट्रोल वन पर्सन इन द रूम मल्टीपल पीपल कैन ज्वाइन द स्टूडियो आई विल ब्रिंग देम ऑन स्क्रीन 1v1 one by one. Okay, Daksh भैया Bayern has an aggregate of 32-7 against London clubs. हाँ यार आई नो बट अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम टाई फॉरफिट कर दें. Kanye Trump Tate has joined. All right, thank you so much Kanye Trump Tate. I know him, he's fine. So I don't think हमें चाहिए. I'll wait for another couple of people to join so we'll establish an order of people. Kanye Trump Tate, as far as I know, is a Chelsea fan. I think the best opening ceremony
Final is der Klassiker. What do you think? Okay. Cool. I'm feeling good, yeah, Vivek. So we're gonna start hearing from our members. The first member is Kanye Trump Tate. Uh, कैसे हो भाई? सही हूँ भाई, आप कैसे हो? सही आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, ऑल क्लियर। Okay, perfect. All right. What do you think about the draw? Like, I know Chelsea is not playing in the team. Are you supporting any team in the draw? Like quarterfinals mein? बाय बाय ऑफ कोर्स बाय। Bayern, you're supporting Bayern. Damn. Okay. So, Bayern ka draw against Arsenal. How do you feel about it? Do you think it's a fair draw? Do you think there is a favorite? What is it? आई थिंक इट्स अ फेयर ड्रॉ, क्योंकि बायर भी Hmm. लाइक टैक्टिकली तो ठीक है, लेकिन ड्रेसिंग रूम टूकल के साथ नहीं है। टूकल हैज ऑलमोस्ट Hmm. लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम। किमिच, मुलर, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ कह रहे हैं, अगेंस्ट में धीरे धीरे हिंट्स दे रहे हैं अबाउट हाउ टूकल इज मेकिंग दैम डू रोबोटिक फुटबॉल, मुलर ने कहा था। Hmm. तो Hmm. और ऑन द अदर हैंड, आर्सेनल, जो आर्टेटा ने जो रिवोल्यूशनाइज किया है, मतलब 4-5 साल में पूरा मोराल चेंज कर दिया है, फैन से लेके Hmm. ड्रेसिंग रूम स्टाफ सबका। तो Hmm. आई थिंक ऑलमोस्ट फेयर ही है, क्योंकि एक Hmm. साइड इन एक्सपीरियंस है, लेकिन दूसरे साइड पे आई थिंक एड्रेनलिन है बहुत ज्यादा आर्सेनल में। Hmm. Hmm. So you think it's a thing of Bayern, एक जो टीम है उसमें काफी हिस्ट्री है वर्सेस आर्सेनल जहाँ पे एक मोमेंटम है. Who do you think is हाँ, Bayern's best possible, like Bayern के सबसे डेंजर प्लेयर्स कौन से होंगे फॉर आर्सेनल दैट आर्सेनल को ध्यान देने पड़ेगा? आई थिंक मूसियाला, मोर देन मूसियाला. केन इट्स मूसियाला। हाँ, मोर देन केन इट आई थिंक इट्स मूसियाला, क्योंकि मूसियाला ऐसा है कि केन बहुत ज्यादा अगर डीप ड्रॉप कर रहा है तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केन को हम्म. थोड़ी सी डिलीवरी चाहिए। हम्म. मूसियाला कैन क्रिएट फॉर एनीवन, फॉर साने, फॉर एवरीवन, केन, साने, और खुद भी गोल मार सकता है, सेट पीसेस लेता है वो। आई थिंक बायर्न की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी फ्रंट लाइन है। उनके डिफेंस बहुत इजी है, ओके. ये फ्रंट लाइन ही उनकी स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक हम्म. मूसियाला इज द वन टू वॉच आउट फॉर इन बायर्न। हम्म. ओके. Okay, what about the other draws? आई थिंक What draw has your sorry, please continue. आई थिंक बाकी ड्रॉज भी पिछले वाले यूसीएल से इस वाले यूसीएल में ड्रॉज बेटर है। लाइक पिछले हम्म. वाले यूसीएल में जो एक साइड का ड्रॉ था, बेंफिका, पोर्टो, ये सब वाला, तो वो बहुत हम्म. डल टाइप का था। लाइक देयर वाज नो काइंड ऑफ स्टार मैचअप। और Okay. एक साइड आपका था मैड्रिड, चेल्सी, मैन सिटी, बायर्न, तो एक साइड बहुत टफ था। इस हम्म. बार इट्स मोर डिस्ट्रीब्यूटेड आई थिंक, क्योंकि बारसा पीएसजी है तो उसमें बहुत स्टोरी लाइन्स है। लूचो, हम्म. डेम्बेले, फिर मेसी का जो होल सागा था, मेसी और नेमार का, तो हम्म. उस मैचअप में बहुत ज्यादा स्टोरी लाइन है। अ, हम्म. फिर एथलेटिको और डॉर्टमंड वाले में भी, दोनों में से कोई टीम कभी चैंपियंस लीग जीती नहीं है। दे आर लाइक हम्म. यू नो दोनों दो फाइनल खेले आई थिंक। डॉर्टमंड ने भी दो खेला, एथलेटिक ने भी दो खेला। हम्म. तो इट्स लाइक दोनों अंडरडॉग भी है, लाइक ब्लैक हॉर्सेस दोनों। अ, हम्म. और फिर मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, आई थिंक इज द बेस्ट मैचअप ऑफ कोर्स। हम्म. हम्म. Okay. If let's say Bayern, not let's say, I mean Bayern, I think मेरे हिसाब से Bayern are slight favorites of going through in this one, but I don't think Arsenal is going to be as easy a game as most people are making it to be. But if Bayern goes through, do you have a preference of what you want Bayern to play? Real Madrid and City में से कोई, and why? आई थिंक सिटी, क्योंकि टूकल का जो रिकॉर्ड है पेप के अगेंस्ट, इट्स लाइक Hmm. वेरी गुड। Hmm. चैंपियंस लीग फाइनल वाला जो हराया था हमने 2021 में, वो 3 बार लगातार हराया था टूकल ने एक दो वीक के अंदर। तो Hmm. टूकल इज समवन हु कैन यूटिलाइज पेप टैक्टिकली। हो Right. सकता है फिर देन इट विल बी डाउन टू लाइक पर्सनल द Hmm. प्लेयर्स, कि Hmm. कोई गेम चेंजर अगर हो जाए तो वो ऑफकोर्स अलग बात, लेकिन आई थिंक बायर्न के लिए तो सिटी ही मैं प्रेफर करूंगा। Okay. And let's say you beat City also.
by whatever you beat City, because I think if you go through this leg, Allianz पे first leg होगा and Etihad पे second leg होगा. Let's say you still go to the finals. Who do you want to play डॉर्टमुंड, in from the other bracket? आई थिंक डॉर्टमुंड, You क्योंकि want डॉर्टमुंड के साथ वो मेंटल ब्लॉकेज है ना, क्योंकि 2 बार हारे हुए हैं वो पहले से। बा, right. मतलब बायर्न से हारे हुए हैं, पिछले साल भी लीग बॉटल कर दी थी बायर्न के अगेंस्ट लास्ट में आके। और Hmm. वो एक मेंटल ब्लॉकेज है, वो बहुत Yeah. बड़ा रोल प्ले करेगा इन Yeah. द फाइनल। Okay. That's fair. What if you match up आई against थिंक PSG or Barca? Would you still be as confident? अगेंस्ट बारसा नॉट सो मच, अगेंस्ट पीएसजी आई थिंक यस। Uh, okay. बारसा में फिर भी मुझे लगता है कि बारसा थोड़ी ज्यादा चार्ज होगी, बिकॉज जावी जा रहा है। अगर फाइनल में वो लोग पहुंच गए तो दे Hmm. एवरीवन विल गिव देयर 100%। अगर कोई Hmm. प्लेयर 100% फिटनेस में भी नहीं है, वो भी इंजेक्शन लगा के खेल लेगा। Hmm. तो आई थिंक तुम बारसा थोड़ी ज्यादा टफर होगी टू फेस इन बिटवीन, और एथलेटिको आई थिंक इज द हार्डेस्ट, क्योंकि Okay. So सिमियोने अगर का अगर जो Bayern स्टाइल and है। Atletico हुआ, are you still confident? नो, नॉट सो मच, Not so much. Okay. क्योंकि Fine. क्योंकि मुझे Uh, लगता है ट्यूकल का जो हाँ. स्टाइल है वो सिमियोने के स्टाइल के साथ वो बहुत थोड़ा मतलब वीक पड़ जाएगा सिमियोने के काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के सामने। Hmm. Okay. That's आई fair. थिंक That's fair. वही है। Yeah. और मुझे Uh, लगता है कि आर्सेनल को ना हाँ. फर्स्ट लेग में लीड Hmm. लेनी पड़ेगी, क्योंकि 100% आर्सेनल फैंस रहेंगे, तो पहले लेग में वो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। First leg में what do you think Arsenal's score should be? आई थिंक कम से कम 2 गोल का डिफरेंस से जीतना पड़ेगा, Hmm. गिवन दैट आलियांज अरेना में, तो वो एटमॉस्फेयर भी रहेगा ना, कि मतलब वो Hmm. एटमॉस्फेयर प्लेयर्स खेलने में, या पोर्टो से भी बेटर एटमॉस्फेयर रहेगा। Hmm. तो आई थिंक 2 गोल का डिफरेंस से जीतना पड़ेगा तो फर्स्ट लेग में आर्सेनल को, टू बी Hmm. एटलीस्ट कॉन्फिडेंट कि दे कैन गो इन सेकंड लेग। और अगर वहां से एक गोल भी खा लिया तो भी दे विल स्टिल हैव अ लिटिल बिट ऑफ मोमेंटम। A little bit of ठीक है, एक sort of security सा एक क्वेश्चन सा रहेगा. All right. हाँ। Last two questions I'll ask you. What are some हम्म, Arsenal players you think will cause a lot of problem to Bayern? Because I think you said Bayern का defense थोड़ा सा leaky है. But what are हम्म, give me three Arsenal players that you think uh, that will be very crucial for us for Bayern Munich to watch out for. मार्टिनेली फिट रहेगा क्या? He will be there. ही विल बी देयर। अच्छा, तो आई थिंक मार्टिनेली, ओडेगार्ड, मोर देन साका। आई थिंक दीज टू प्लेयर्स, मार्टिनेली, ओडेगार्ड। Martinelli, मार्टिनेली Odegaard, क्योंकि, Saka. Hmm. हाँ, क्योंकि दोनों फुल बैक जो है, डेविस और किमिच, किमिच वो राइट बैक खिला रहा है लाइमर की जगह। Hmm. और डेविस थोड़ा डिफेंसिवली तो वीक है ही, क्योंकि बहुत आगे चला जाता है वो। Hmm. मुझे Okay. स्ट्राइकर, आप स्ट्राइकर जेसूस खिलाओ या हैवर्ट्ज खिलाओ, आई डोंट थिंक तो कोई डिफिकल्टी होगी, क्योंकि किमिंजे फिट हो जाएगा तब तक, तो वो स्ट्राइकर को Hmm. संभालेगा। बट विंगर्स और ओडेगार्ड, आई थिंक दीज आर द मेन थ्रेट। Nice. So I think Kim will be fit for our striker. I think Davies versus Saka will be an interesting matchup. Right back पे versus Martinelli will be super interesting as well. कि लाइमर खेलेगा, किमिक खेलेगा, साशा बॉय खेलेगा, वो देखना important है. I think if Sasha Boy plays against Martinelli, then Martinelli will still be quiet. Sasha Boy मेरे हिसाब से बड़ा underrated defender है. But we'll see. हाँ, We will see how it will be there. All right. Final question. Prediction. Prediction प्रिडिक्शन। of total aggregate. Don't give me legs. Give me total aggregate and who will go through. तो चलेगी 4-3 बायर्न। 4-3 Bayern. All right. Fair enough, bhai. Thanks, yaar, for coming on. Is there anything last few words you want to say? यस, यस, बैलन डॉर फॉर कोल पाल्मर। Ballon d'Or for Cole Palmer, of course. ठीक है. Thank you so much for joining. Leave the room ताकि बाकी लोग जो होंगे उनको ज्वाइन करना होगा डिस्कॉर्ड से, वो भी कर लेंगे. Thank you so much for joining. Next up, एक सेकंड में प्राइवेट चैट चेक कर लेता हूँ. हाँ. Next up is Ayan. Now Ayan को I also know, so I don't think उसको कैमरा ऑन करने की ज़रूरत है. एबिन को भी कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है. ट्रेसी को भी ज़रूरत नहीं है. विनय वर्मा, इफ़ यू कैन प्लीज़ अरेंज फॉर अ कैमरा. यू आर स्टिल 15-20 मिनट्स अवे, सो इफ़ यू कैन बाय नाउ, आप करना चाहें तो कर सकते हैं.
Raghav, I'll also expect you कि camera कहीं से arrange कर ले if you can. Shantanu is fine. Shantanu doesn't have to do it. All right, Ayan, you're up. I will add you in just 30 seconds. Just let me welcome Ayush to the membership chat. Yeah, thank you so much for joining in. And guys, in the chat, please be a little nice to people. There, a lot of people have camera anxiety. A lot of people have their own opinions. सबके पास equipment नहीं होगा. मैंने काफी पैसे खर्च के mic लाया हूँ. A lot of people are just speaking just like that. So relax, okay? Just be nice. Just be nice to people in the chat. डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक मैं आप लोगों को बता देता हूँ. कम्युनिटी पोस्ट, मेंबर्स ओनली कम्युनिटी पोस्ट पे फर्स्ट लिंक जो है आपको पोस्ट मिलेगा, उसके कमेंट में आपको डिस्कॉर्ड लिंक मिल जाएंगे. ठीक है. सो चेक द लेटेस्ट कमेंट ऑन द लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट इन द मेंबर्स ओनली कम्युनिटी टैब. ऑलराइट. दक्ष भाई, आई एम अ मेंबर लेकिन डिस्कॉर्ड पे ऐड नहीं हो पा रहा. आप, मैंने अभी जैसे बताया पार्थ, check out the latest members only community post. Usme the latest comment, and then you will find it. Let me take a couple of chats before I bring in Ayan. Why people are call Arteta so arrogant, like he hasn't won anything and has attitude of Pep and Carlo? Um, because you will have to unfortunately win something for till you get to get people's approval, right? आप वो तो एक बात सोचो ना हार्दिक, Klopp has won every trophy. Still people think like Klopp is now top 2 top 3 in most people, but still people disrespect Klopp thinking वो अच्छा manager नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है. So it is what it is. Relax guys. 300 people are watching. Like the stream if you haven't. Subscribe if you're new. Join the membership if you want to come on the stream and give your views. Ayan, a Barca fan, has been added now. Ayan, kaisa hai? Hello, am I audible? Yes. Oh, what a smooth, nice voice. हाँ, कैसा है? ठीक है अभी तक ठीक है. Okay. Ayan, how are you feeling about the draw? तू तो ट्विटर पे बड़ा खुश था. हाँ, I was happy initially because it could have got worse. Bayern मिल सकती थी, Arsenal, City, Madrid. अगर ये चार टीम मिलते तो कोई चांस नहीं था, definitely. हम्म. City, Madrid मिलती तो definitely out. But हमें हम्म. PSG के लिए I was initially happy, but थोड़ा सोच के after 24 hours I had chat with दूसरे Barca fans and ऐसा लग रहा है कि PSG are heavy favorites for this one. Like You think PSG are we'll have heavy to have a favorites? yes, I think it's 80-20 PSG. Hmm. Okay. 80-20. I don't think it's that skewed also, भाई. इतना भी skewed नहीं है मेरे हिसाब से. Okay. Why do you think PSG are heavy favorites? Chal, let's understand that first. See, first, it's because of their manager, Luis Enrique. He knows Hmm. Xavi, he knows the team, he knows our academy, he knows everything, he knows our weakness. He will understand our game properly, and he will set up himself in such a way that he can counter Xavi. And Xavi is relatively inexperienced and not that level of Luis Enrique to counter him. So that's the point. Hmm. Second, the thing is we have always been vulnerable at the back with pacey wingers this season. Uh, Okay. and they have a lot of pace. They have the fastest front line in Europe, I think. Yeah, they do have. They So do, it's yeah. going to be really tough. And the third thing is they have their stadium, Parc des Princes, and we don't have a Camp Nou. So that's the third disadvantage. Do you think it's been a very big disadvantage not playing at Camp Nou? Till the Napoli second leg, I would say yes, because Hmm. Napoli second leg where fans turned up. They actually Hmm. turned up for the very first time. They didn't turn up in the El Clasico like this. But Okay. if the same thing they do it in a 95,000 1 lakh capacity stadium, it will be double, right? So it's Hmm. obviously a disadvantage. Hmm. ओके, फाइन, फेयर इनफ. तूने नेपोली वाला ऑफ कोर्स गेम्स दोनों देखे. सेकंड लेग में यू बीट देम क्वाइट नाइसली, अच्छे से एग्रीगेट पे निकल गए थे. बट जो फर्स्ट लेग थी, यू मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस. ऑफ कोर्स एक ऑब्वियस आंसर तो ये है दैट बार्सा हैव टू टेक दैट चांसेस अगेंस्ट पीएसजी टू एक्चुअली क्वालिफाई एंड एवरीथिंग. बट व्हाट एल्स डू यू थिंक यू गाइस हैव टू डू टू मेक श्योर यू क्वालिफाई अगेंस्ट पीएसजी? आई नो तूने बोला हैवी फेवरेट्स, बट अगर बार्सा को आगे निकलना, उनको क्या चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम दैट नेपोली गेम? We have to keep the same approach as the Napoli game, but we have to maintain our intensity for 90 minutes. It is ओके. very difficult, but we have to add our players need to have a good day. None of our player can have a bad day. Like Leva cannot have a bad day. Ter Stegen cannot have a bad day. Any of the centre backs cannot have a bad day. Hmm. Against Napoli, everyone was good. Everyone Hmm. was really good against Napoli, each and every player. So against PSG, all the players have to step up and do and overperform what is expected from them Okay. because we will concede.
Hmm. It's very obvious we are not keeping a clean sheet in any of the games. It's very obvious we'll Hmm. concede. So we have to outscore them. To Right. outscore them, our attackers have to take the responsibility more. Hmm. Okay. एक सेकंड अयान से मैं और क्वेश्चंस पूछूं गाइस इफ यू आर अ मेंबर यू कैन चेक द लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट मैंने उसमें नया डिस्कॉर्ड लिंक डाल दिया शुड बी एक्टिव यू कैन ज्वाइन नाउ इजीली आप कमेंट्स में मत ढूंढो चेक द लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट ओके अयान टेल मी without bias because I know you love Jao Felix and I know you love Frankie. Without bias, if you want to include them, fine. Okay. Tell me three most crucial Hmm. players for Barca for this leg. Most crucial players for Barca. Okay, I'll say Ter Stegen, number one. Hmm. Mm-hmm. Uh, Number two, Gundogan, Agreed. Yeah. and number three could be between Araujo and Yamal. Hmm. I'll say Yamal. Okay. Lamine Yamal, Ter Stegen, and Gundogan. That's fair, यार. Gundogan. Yes. हर एक line पे you have to have those players. Now, अभिषेक के क्वेश्चन है काउंटर पे खेलना चाहिए बारसा को पीएसजी के अगेंस्ट डू यू अग्री विद इट और डू यू थिंक तुम्हें पोजीशन डोमिनेट करनी चाहिए See, the thing is, to play in counter against PSG, we need to have a really physical midfield, which Newcastle had, and they almost won away at PSG. We don't have that physical midfield to Hmm. not allow them to move the ball. If we are playing on counter, we'll give them the ball and allow to move it around. They'll eventually score. We won't Hmm. unsettle their structure. We'll just be Okay. sitting in our box. So that's not possible. Also, this is what PSG will do. They will give us the ball. See, you That's play true. the ball. But if you do a mistake, Mbappe, Barcola, Dembele on your high line, Hmm. on the shoulders of your defenders, and you're done. Hmm. Okay. And PSG से ऐसे कौन से players हैं that you are three players that you are the most worried about? Mbappe तो of course है, so let's not include him. But Mbappe के Yeah, अलावा three players. Mbappe. Yes. I'd say uh, three players for one is Ugarte, their CDM. Yes. If yeah, if their Mm-hmm. CDM. Uh, Nuno Mendes, That's true. Nuno Mendes because होगा him I with think Lamine Yamal के against होगा ना अगर वो left back yeah he'll खेलेगा. be Yeah. against yeah he will be against Yamal, and he will also be helping Mbappe and Hmm. Barcola on the left wing. Yeah. And third will be uh, Barcola or Dembele, the wingers basically. Do you think Dembele will have a huge game to play in this like huge role to play in this game? Are you Of scared of course, Dembele? I एक बात feel बता honestly. Are you yeah, scared of Dembele because he'll be on the right wing? उधर Cancelo होगा. Cancelo loves to move आगे. yes, which is why I'm scared of Dembele. And see, Dembele will come back to defend, so Hmm. he'll defend against Cancelo. And when we lose the ball, he will reach our goal before Cancelo does. So he's Okay. basically against our LCB, against Kubarsi or Inuko, whoever is playing. Hmm. Okay. Give me your starting lineup for this first leg. First leg, sirf. First leg, Frankie de Jong will be back, and Pedri Okay. will not be back. Okay. Okay. So, Ter Stegen, Hmm. right back Kunde. I'm not putting Araujo right back. I'm not doing that Madrid Super Cup final mistake ठीक है because ठीक है Mbappe ठीक है. can come centrally. Yeah. Second, so Kunde right back, Araujo. Inigo, I'm not playing Kobashi because I want Inigo to be physical with his winger or with Hmm. Mbappe, whoever he is. And left Hmm. back Cancelo. Christensen, Frankie de Jong as double pivot. Gundogan Okay. moves to number 8, where he's more productive. Fine. On left wing, I'll play uh, tough one between Ferran and Rafinha. Left wing पे I'll play Rafinha. Raf. Yeah, he did play versus Napoli there, and he Okay. helped out Cancelo a lot, a lot. No Out Joao of position, Felix. we were unfortunately no. He's Okay. see to not allow them release Mbappe in behind, we'll have to counter press them Fair. every time we lose the ball, and Felix is Uh, lazy, so we'll have to play someone who's always running, and that's Rafinha. So left hmm. wing Rafinha, right wing Yamal, and striker Lewandowski. Okay. Okay. ये तो हो गया वारसा वाला. Now in your bracket, of course, there's Dortmund and Atleti. अगर you get matched up against Atleti, would you be confident into reaching the finals? Like because If you've we get had Atletico Atleti, Madrid, हाँ, Atleti को तुमने beat करा हुआ है इस season, right? yes, we have not conceded a goal against Atletico Madrid for over 1.5 years something. Yeah.
So I So, think we have a really good chance against Atletico Madrid. Whoever we face in the semi-finals will be easier than PSG. so you think this is actually your semi-final without semi-final? Okay, fair enough. Yeah, On the it's other like side that. of the bracket, तुझे पता है तीन हैवी फेवरेट्स हैं बायर्न म्यूनिक रियल मैड्रिड एंड सिटी में एंड एक ऑफ कोर्स आर्सेनल है ही है डू यू हैव अ प्रेफरेंस इन फेसिंग एनी ऑफ दोस इन द फाइनल्स If we are winning, give me Madrid. if you're winning give me Madrid damn El Clasico final in Wembley बट ओके बाकी ड्रॉस की Yes. बात करते हैं रियल मैड्रिड सिटी में तेरे को क्या लगता है हु इज अ लिटिल हैवियर फेवरेट या डू यू थिंक इट्स परफेक्टली बैलेंस्ड Uh, it's perfectly balanced, but I think Madrid will win this because City have downgraded from last year, हम्म तुझे तुझे नहीं लगता कि and सिटी Madrid फिर have से वो 4-0 टाइप्स कुछ कर सकती है इस सीजन they can. I mean, Madrid ka defense is not the greatest, it's not the best, but हम्म uh, I don't think utna hoga. If anyone is scoring more than two, I think it's Real Madrid because they have Vinicius, Bellingham, and that the हम्म UCL night thing. Uh, so I think it will be a close win for Real Madrid हम्म by one goal. ओके इफ यू हैड टू इफ यू बारसा कह रहा हूँ बायर्न एंड आर्सेनल वाला अगर तू फिक्सचर देखे Uh-huh. who do you think is slight favorite or heavy favorite or balanced what do you think it is I think Arsenal are slight favorites there. you I think don't think Arsenal are anyone is slight heavy favorite. favorites Yeah, yeah, okay because you just have to somehow see out the Allianz Arena game. That's it. And Emirates you are beating them. okay so you think Emirates पे आर्सेनल बीट कर देगी Allianz पे किसी तरह आपको Yeah, नेगोशिएट yeah. करना But पड़ेगा a draw is fine, or even a goal Hmm. deficit is fine. You cover up Okay. with the Emirates. Okay. I'll ask you for two games. Give me the aggregate of both games. Okay. Give me the aggregate of Barca PSG. 5-2 PSG. 5-2 PSG. Damn. Are you underplaying? तो ऐसे No, I'm not jinxing. I'm not you're not jinxing. underplaying. अच्छा, you This is genuinely what I think think. PSG 5-2 This निकाल is what सकती I है. think. Yes. Hmm. And give me the aggregate of City and Madrid. City 6-5 Real Madrid. 6-5. Oh damn. 6-5 Real Madrid. Yes. Okay. Fair enough. Fair enough. Last cheese before I let you go. Are you happy with how Barca season has gone? Like Champions League quarters, third in La Liga, but still can there is potential to be at least second. I'm very happy with the way we have gone in the Champions League, but I expected us to win the La Liga this year. So Hmm. it's really, really disappointing on that side. Hmm. Fair enough. Chal Ayan, thank you so much यार. I'll have to rush through now other Hmm. people as well. Room leave कर दियो ताकि अगर बाकी लोगों को join करना पड़े ठीक है तो it is ठीक what है it ठीक is. ठीक है? है ओके बाय बाय Okay. बाय Bye bye. Uh, Mayank bhai, unfortunately, I will have to give every speaker enough time to speak their mind. बट मैं दो लोग इसलिए नहीं ले सकता बिकॉज अगर इनमें से एक भी रोग चला गया इवन दो आई नो देम फ्रॉम डिस्कॉर्ड स्टिल आई विल से कि जस्ट फॉर माई चैनल सेफ्टी मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता सो मेरे को थोड़ा सा करना पड़ेगा एनीवेज आई टेल यू द ऑर्डर एबिन इज नेक्स्ट उसके बाद मयंक भाई उसके बाद ट्रेसी देन विन है दोज आर द नेक्स्ट फोर पीपल दैट विल ज्वाइन एबिन आई एम गोना ऐड यू नाउ एबिन भाई इज एन आर्सेनल फैन कैसे हो एबिन भाई हाउ आर यू Hello, hello. Am I audible? Yes, perfect, perfect, perfect. Okay, How are okay. you? Yeah, I'm good. I'm good, Daksh. Thank you. Thank you for having me. Of course. Yeah. क्या लग रहा है भाई बायन मिल गई हाँ could have been easier Yeah. but at some point we had to face a difficult team right I don't know the easiest team there would have been Dortmund. I wouldn't have faced Atletico. mm. Madrid, I don't know. Madrid, yes, maybe, just to get some experience out of it. Mm. City could have been difficult and it could have like completely, Mm. um, killed our PL momentum as well if we, That's true and PSG, it's all vibes. And Barca is also there, I would say. Like Dortmund and Barca are the two teams that I would be much more mm. confident about compared to the other ones. Yeah. Mm.
But then this Y- already is a difficult fixture for me. I think Yeah, yeah, yeah. this is Eh, not going to be easy. Yeah, go on. tell me one thing though. Like, if we beat Bayern Munich, which I think we are capable of, I don't think it's going to be easy or straightforward. We're going to smash Bayern or whatever. But I also don't think it'll be like a 10-2 to Bayern. I mean, I hope not. But if we beat Bayern, हमारे सीजन के लिए एक ऐसी विक्ट्री क्या कर सकती है? I think if we beat Bayern, even if we lose out on the final spot, or like even if we get a very difficult team in the semi or something, I would be Hmm. very happy because Hmm. I was in college when the last time we met Bayern, and Bro. I mean it was I would say like those were probably the worst days as an Arsenal fan, especially in Hmm. Europe. So yeah, I would be happy, and also uh, to be honest, I am just already happy because we crossed round of 16 somehow after like so Somehow. long, Dude. and yeah, Yeah. even that was difficult, and we needed Hmm. some luck there, and yeah, Hmm. Raya helped there, Hmm. but then yeah. Okay. But if we win this, Yeah. I don't know. If we get Madrid or City, I'm not so sure about whether we can go through them. Yeah. I'm not. I'm not so Yeah. sure. Yeah. Look, it won't surprise me अगर आर्सेनल क्वार्टर फाइनल से भी निकल जाए, बट टिल नाउ आई थिंक जितने भी डिफिकल्टीज इस टीम के सामने आई हैं इस सीजन, यू टेक लिवरपूल एट होम, you take Anfield, you take City at home, somehow this team has found a way to win the game, right? Like Anfield पे short draw हो गया था, it is what it is. But Anfield पे भी I think we played really well. Initially हमने बहुत अच्छा खेला था, then चलो ठीक है, the game started going, but that's Anfield, that's okay. But it gives me a little bit of confidence कि यार ये टीम जब difficult fixtures आते हैं ना कहीं से motivation निकाल के खेल लेती है. Do you think Arsenal are underestimating Bayern Munich, or do you think in general Arsenal are being underestimated because बहुत टाइम से हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं? I think the history for the last 6-7 years is probably one of the major points why people are underestimating Arsenal, and I totally agree with that. It's perfectly fine. Ours is a Hmm. younger squad. We haven't had much experience in Europe for the last, especially in the cream la cream. I mean, and we have been there Hmm. in Europa, but then I won't count that much. And Yeah, of course, fair enough. this is probably our first proper season in Champions League in like 7 years or something. And the last time also when we went there. But then the best thing I find in this Arsenal team is that we don't have any players from that older Arsenal team from 2016-17, Yeah, or like we have 15-16 Arteta. actually. Yeah, we have Arteta. We have Yeah, we Arteta. have that in the coach. But then I don't think the rest of the players. I think Shaka was there last Shaka is season, there. but then he has Yes. left now. So yeah, Hmm. probably he was the only guy who would have had a bit of PTSD in going That's going with true. this match. That's true. But then this particular team, I feel Hmm. we have been to away teams. We have been to some of the worse away Hmm. stadiums in like Anfield or yeah. So I think we performed pretty well there. Hmm. In terms of the match, I feel Bayern is defeatable. Hmm. It's not like they're having a very perfect 2020 type season. Yeah. They are defeatable, and for us, I would say getting at least a draw, Hmm. a draw from the first leg will be very much important. I won't say we have to push a lot in order to get like a 1 or 2 goal lead. It's Hmm. fine. It's the first leg. You never know, and I believe Bayern will be much more defensive in that first leg because they know they कि will have the आगे हम full पे crowd support in yeah, the second in yeah. that second leg, and it could completely change in that second leg. You never Hmm. know because Yeah. Porto, Porto second leg was a difficult game, even though it was at our place. Hmm. And Hmm. Porto is obviously a much more inferior team than Bayern. Hmm. And I'm looking forward to similar mid block Hmm. or a higher block, but then मुझे तो हाईलाइन much लगती more, है. much more, much more effective Yeah. pressing. And they have got better runners than Hmm. Porto in Sane, Musiala, or even Tel. Hmm. So it's going to be very difficult. I don't think, but then I would want this team to not lose at our Hmm. home. Hmm. If it's a draw, it's fine. It's fine. Go there, play it out. You never know. You will get a Hmm. chance.
And I Yep. don't think Tuchel will also be going all out against us, even if Hmm. it's a draw in that second, going into that second leg, Hmm. because he will know the runners that we also have. Yeah. Yeah, it will be a Yeah. tricky one, Yeah. obviously. Yeah. Yeah, there are some things I think जो हमारे फेवर में आती है. We've not conceded a goal at home in the entire Champions League. I think अगर हम पोर्टो वाली गेम को देखें, पोर्टो को पता था that there is a difference in quality of our players and their players. So they tried their best. उनका पूरा game plan was to neutralize us. But Bayern is a giant team. It's a team with a lot of heritage and history. And मुझे नहीं लगता वो back foot पे खेलेगी. मेरे हिसाब से they will try to impose their style on us, and we will try to impose our style on them. And मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बायर्न विल प्ले अ मिड ब्लॉक अगेंस्ट आर्सेनल, जैसे बायर्न ने स्टुटगार्ट के अगेंस्ट खेला था. आई थिंक वी कैन ब्रेक अ मिड ब्लॉक जिसमें बायर्न है, सिंपली बिकॉज अच्छा चल वो छोड़, मैं हम वो टैक्टिक्स के बारे में तो कभी और बात करते. अज्यूमिंग एवरीवन इज फिट, अज्यूमिंग Tomiyasu is back, assuming Martinelli is fit, assuming Timber is also back and I fit hope they enough are. to play a game. I How pray they what are. हाँ, होपफुली ब्रो, होपफुली. तेरा क्या होगा starting 11, assuming everyone is fit enough and fit to play also to their best capabilities? Okay. I would play Raya at goal, Right, Saliba Gabriel. right. Uh, the left, I would say if Timber is free, if Timber is ready, Hmm. then probably Timber as the first option. Okay. But then it depends upon a game against Luton and Brighton. I would want Arteta to try give few सिर्फ होम minutes to होम Timber. Yeah, फिक्सचर की बात कर, सिर्फ होम फिक्सचर. yeah, आगे okay, पीछे वाली गेम्स अभी छोड़ दे. जस्ट okay. होम फिक्सचर पे, assuming everyone is fit and ready. Then I would say Timber, play Timber, Okay. because Timber will help us in attacking more Okay. than Tomiyasu. Yeah, obviously Tomiyasu will be much more give us much more defensive stability. But then since we are playing at home, I would say Hmm. try to attack more in that first Okay. game, Okay. especially in that first 15-20 minutes. Those Mm-hmm. will be very crucial. They will be under pressure because of the Hmm. crowd. So Hmm. yeah, and on the right, uh, Benjamin White. Okay. I would call him Benjamin. And then in the middle, I would like to have Partey and Rice starting, because Okay. we need to Fair shot. dominate more. Hmm. And along with Odegaard, I Hmm. wouldn't play uh, Jorginho if Timber is already there. All right. If Fair Timber enough. is ready, yeah. Hmm. So I would like to have Partey, Hmm. Rice, and Odegaard in the midfield, and up front I would like to have Kai Havertz, Saka, and Martinelli. Okay. Yeah, That's fair. Yeah. because if it's a mid block, or if it's a Hmm. higher block, I feel uh, Kai Havertz will give us much more, Hmm. give us What about those, Trossard in this game? physicality. Do you Yeah. think this is not a Trossard game? जैसे उसने पोर्टो के against one shot one goal मार दिया था. You remember like Havertz didn't have enough opportunities to score. Jesus के पास opportunity थी but उसने miss कर दी थी. No shouts for Jesus and Trossard to start. The thing is, Bayern will be playing both their fastest runners on their Hmm. wings. That is Davis and maybe not Sasha Boy, or Hmm. maybe Kimmich on the right, Right. RB, Right. because Kimmich played at RB Hmm. in that previous game, I guess. Yeah, in that Okay. previous game. Yeah. So probably like they will be keeping them on their wings, and I don't think if it's like a mid block or something, Hmm. Tross will be much more of a help there, because Fair he enough. doesn't have that pace. Later on, probably like after 70, Hmm. 75 minutes, as a Martinelli sub or something, yeah, I Okay. can consider Tross. Yeah. Hmm. If you had a preference, let's say we beat Bayern Munich. If you had a preference to face either City or Real Madrid in the semis, who would you face? We are familiar with City. We are playing City on 31st March. But there's also Real Real Madrid. Madrid. You'd Real want to Madrid. face Real Madrid in the Yeah, Real semis? Madrid. Yeah, yeah. नई टीम चाहिए. I Yeah. would want these players हाँ. to go to Bernabeu हाँ. and experience what a historical, or what a true UCL night is like. Okay. Let's say we get through to the final, assuming सब आइडियल चले जाता है, हम फाइनल तक चले जाते हैं. Who is your preference to play in the final? PSG, Dortmund. Dortmund. अच्छा, Dortmund के अलावा Dortmund के Dortmund के अलावा Um, I would say Barca, PSG. Barcelona. You want to play Barca in the finals?
2006 का Atletico, I'm not so sure. Atletico, I'm seriously not sure. Atletico in that final Yeah, will be man. complete Yeah. like proper haram ball. Oh. Simeone haram ball, and I don't know. Hmm. And it's a one-off thing, and it's a one-off game. Uh, if it was like a two-leg tie, I would have been much more confident. But then, being a Hmm. single-leg tie, it's going to be very difficult. Fair shout. Bhai. Fair Yeah. shout. Fair shout. Okay. Last question before we get in. Mayank is next. Last question. Aggregate for Arsenal Bayern. I would say 2-1 Arsenal. 2-1 aggregate. So you 2-1 think? aggregate. Yeah, 2-1 aggregate. Okay. Damn, that'll be a very close game, huh? तो मतलब It will be a very close game, and I don't think हाँ. there will be much goals in that, Okay. because Both yeah, teams are actually yeah, very high quality, man. yeah. Yeah. But And you give the slight edge. until then, I think Kim Min Jae will be back in the team. Yeah. He will be back in the team. He's currently benched for some Hmm. reason Hmm. that I don't understand. But whatever it is, and I'm not so sure whether Upamecano will be there for that game. Will he be there? Hmm. Is he fit right now? Or उपमेकानो पता नहीं मेरे को नहीं पता वो खेलेगा या नहीं. yeah, okay. Hmm. If he's fit, then I'm probably seeing Upamecano, Kim Min Jae, and Delict starting that game. Okay. Yeah. Chalo. I think we can. There is a slight chance we beat them, but it all Yeah, depends we on can. form. Yeah, it all starts with City. मेरे को लगता है if we beat City, we'll have massive confidence going into Bayern Munich जो 9 दिन बाद होगा उसका. But let's see, यार. See, That I am was. saying 2-1, either 2-1, Huh? or it will be penalties. We will Oh, win by penalties. yo, one team has never won 2 penalty shootouts in the single UCL campaign. Arey, we will make history, yaar. We haven't won the We'll UCL make at all. history, bro. This is the spirit, man. This is the spirit. This is how we should go into the game. Thanks, Arabin, Yeah, for joining in. yeah. Uh, Thank you for having me, man. yeah, man. All good, all good. See you on Discord again. Chalo, okay. All right. Bye. Next up is Mayank. Mayank के बाद विनय भाई हैं. विनय भाई, camera on कर दो so I can see it's you. Otherwise, I won't be able to add you. Oh, Vinay bhai has gone. If he comes back, then it's Vinay bhai. Otherwise, it's Mayank. अगर विनय भाई नहीं आते हैं, then it will be Umesh afterwards. Okay. So, Mayank, हेलो City fan. है ना How are you feeling, brother? How are you feeling 3 years in a row Real Madrid के साथ? First skirmish में they beat you. Last season you beat them. क्या लग रहा है third time? दक्ष भाई पता है टीम उनके मैच की चिंता नहीं है वो जिस जगह पे कॉम्पैक्ट है ना बीच में स्पर्स अवे भी है कोई रेस्ट ही नहीं है That's true. But do you not think you have the squad to deal with it? हम तो रोटेट ही नहीं करते You did rotate Diaz out, to be fair, for Liverpool. तो भैया वो रोटेट नहीं होता ना फिर वो 11 प्लेयर जो खड़े हैं बस वही खेलेंगे कोई रोटेशन नहीं होती बेकार है सब मैं तो टूट गया ऊपर से क्या कहते हैं यार नहीं चाहिए थी मतलब हर बार नहीं जीतेंगे ना हम उससे और क्या कहते हैं बायन से वो तो सॉरी बायन कह रहा हूँ मैड्रिड से लेकिन किस्मत अच्छी है कि सेकंड लेग एतिहाद पे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि निकाल लेंगे हम चाहे कैसे भी करके निकालें पर तब तक पीएल रेस चली जाएगी इस बार हाथ से पहली बार हम अनचार्टेड टेरिटरी में गए ना आपकी वजह से इसमें क्या अनचार्टेड है भाई इसमें क्या अनचार्टेड है भाई तीन वाली टाइटल रेस मैंने अभी तक नहीं देखी अपने टाइम में That's true. Three horse title race मेरे हिसाब से 5 साल 6 साल से नहीं हुई. I think it was only City and Liverpool in the title race. So maybe with one it was slightly easier, but वो high level की title race होती थी. This time is the first time वो 3 people हुए. हाँ. और उसमें एक और चीज होती थी कि ना हम जैसे दो ही टीम टाइटल रेस में और दोनों की दोनों यूसीएल खेलती थी तो बिल्कुल इक्वल रहता था और दोनों सारे कंपटीशन में डीप जाती थी तो उसका बहुत फर्क पड़ता था पर सिर्फ वहां की तो तब सोचेंगे क्योंकि कल भी मैच है ना कल नहीं आज अभी 2-3 घंटे में आज यू प्लेइंग न्यूकासल टुडे हाँ वही तो Do you think in the title race Liverpool are favorites or you are favorites or Arsenal or do you think it's still too early to call? अभी पिछले 5 गेमों में इतना ज्यादा चेंजेस देख लिए पता है ऐसे चेंजेस नहीं पता चल रहे चेंजेस तब पता चल रहे हैं जब पिछले 5 गेम के वो देखो ना कि 23 गेम में ऐसा था कि क्या कहते हैं हम फोर्थ थे तो हम सेकंड चले गए आप लोग फोर्थ थे एकदम से फर्स्ट चले गए अभी अगले 5 गेम में फिर से क्या पता हम चले जाएं नीचे मतलब नीचे ही हैं पर हाँ but you can कुछ still नहीं go. पता Yeah. हाँ
बिफोर हम सारी चैंपियंस लीग गेम्स की बात करें, क्योंकि आई थिंक बोथ ऑफ अस प्ले ऑन द सेम डे 9th को, सेम टाइम पे, इनफैक्ट आई थिंक दैट्स टेरिबल हाँ वही तो, शेड्यूलिंग, बट कोई भी मैच नहीं देख पाएगा दूसरे का। हाँ, बट उससे पहले वी प्ले ईच अदर ऑन द 31st एट एटिहाद। क्या क्या फीलिंग क्या आ रही है उस गेम की तुझे? फीलिंग तो बहुत कुछ आ रही है, लेकिन ना कई चीजें ना सिर्फ मैसेज करने में अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे बोल दिया ना तो मेरे को क्लिप नहीं होना। नहीं 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 नहीं, बोल सकते हैं यार, कोई बात नहीं। अरे वो तो कोई बात नहीं। अरे यार मुझे लगता है यार, मतलब कि मेरे को हम्म, बैक करना चाहिए अपनी टीम को यार, हम जीत जाएंगे 3-1 यार। घर पे खेल रहे हैं हम अब। मैं अपने घर पे, मैंने रॉड्री को गेम ही हारते हुए नहीं देखा है, तो दैट्स ट्रू मैं फॉर अ इधर। कैलेंडर ईयर, या। हाँ वही तो, जीतना चाहिए, हम्म भले ही स्क्रेप कर ले विन। क्योंकि अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो फिर किसी और का फायदा हो जाएगा, टाइटल रेस से तब भी कोई बाहर नहीं होगा। फिर सिर्फ हम्म हम 3 पॉइंट पीछे होंगे, मतलब कि फिर भी लिवरपूल गेम हारती है तो फिर से हम लोग ऊपर जा सकते हैं, मतलब हम्म फर्स्ट सेकंड पे। तो इतना हम्म कुछ वो नहीं होगा, पर मोमेंटम चला हम्म। जाएगा। 31st को तो यार इट्स गोना बी ह्यूज मैन, एंड आई थिंक एक साइकोलॉजिकल बूस्ट तो मिलेगा फॉर यू इफ यू विन, ऑफ कोर्स बिग, देन यू विल गेट अ ह्यूज बूस्ट फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज यू गोइंग टू सैंटियागो बर्नाबाउ। हम लोग एमिरेट्स पे खेलेंगे इफ वी बीट सिटी। In fact, I would say even if we draw with City, of course, Liverpool will go ahead if we draw with City. But if we beat City somehow on the 31st, मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल बूस्ट बायर्न के अगेंस्ट भी मिलेगा। तो हम्म। 31st वाली गेम मेरे हिसाब से बड़ी पिविटल है। डू यू थिंक दिस? आपके लिए ना, हाँ, बोल बोल। आप आपके लिए ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना हम ना मतलब हर साल ना compete करते हैं ना। अगर हम हारते भी है ना वो गेम, तो मतलब पेप को इतनी आदत है कि वो हमको भुला देगा कि हमने पिछले गेम में क्या करा है। हम्म कि हम्म लेकिन अगर अभी हमें ये नहीं पता कि अगर आर्सेनल बाई चांस अगर वो गेम हारती है, तो हम्म नेक्स्ट गेम में वो मोमेंटम कैरी करेगी कि नहीं करेगी, या फिर हम्म। पिछले साल भी देख लिया था वो एक ड्रॉ से क्या क्या हो गया था। यस, वो एक बार क्रम्बल हो जाता है तो कोलैप्स शुरू हो सकता है आर्सेनल का। दैट आई मतलब कंप्लीटली जरूरी एग्री। या। मतलब जरूरी नहीं है ऐसा हो, पर हमको आदत है, मतलब इतना देखने के बाद हम्म ना पता है कि ये होता है। Okay, yeah, no, that's fair. हम्म। Last season, the Madrid you played had Benzema, they had Vinny Rodrigo, जो इस season भी हैं, but this season they've added Jude as well. Do you think भाई this year की Madrid gives you a different challenge? भैया प्लेयर डिफरेंट नहीं है, क्या Hmm. कहते हैं, फॉर्म डिफरेंट है। वो Hmm. अच्छा खेलने लग गए हैं और हम खराब खेलने लग गए हैं। Hmm. मतलब पिछले उसके हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से, पिछले Hmm. इस टाइम पे आके तो हम इमोर्टल ही हो गए थे पिछले साल। और Hmm. वो बिल्कुल ही टाइटल रेस से बाहर हो गए थे। और उनके साथ मतलब इतनी सारी इंजरी वगैरह, क्या कहते हैं, या किसी को शायद रूडिगर को नहीं, मिलिटाओ Hmm. को येलो वगैरह मिल रखा था, जो उनका बेस्ट सेंटर बैक था अवे स्टेडियम पे। तो Hmm. बहुत कुछ हमारे फेवर में भी था, फेवर में इस Hmm. साल भी है। क्या कहते हैं, फाइनल से पहले तक दोनों लेग हमारे को मतलब होम पे मिल रहे हैं। हर कोई प्रेफर Hmm. करता है कि सेकंड लेग होम पे हो, ताकि वो अवे जाओ जैसे ना तैसे ड्रॉ निकाल लो या एक गोल भी खा लो, तो तुम चाहे कितनी कैसी भी टीम हो, डॉर्टमंड तक उम्मीद करती है कि हम 2 गोल मार सकते हैं सामने वाले के। Hmm. Starting lineup for your UCL, assuming everyone is fit and ready. इतना हंसी आएगी ना बोलते हुए, बोल पर बोल बोल बोल, फोर्डन को इट ना, इज यू मैन, इट इज योर फोर्डन ओपिनियन। फोर्डन को फिर से बेंच होना पड़ेगा यार। अबे यार कसम हम 2-10 नहीं खिला सकते। पता है हम ना बहुत खुल जाते हैं, पिछले गेम में ना लिवरपूल के हम्म अगेंस्ट देख लिया। कोवाचिच को खेलना ही पड़ेगा अब, वो चाहे क्या कहते हैं ग्रिलिश को, मतलब कि ग्रिलिश फिट होके आ गया इसलिए बोल रहा हूँ, वरना फोर्डन उस विंग पे चला जाता। मतलब हम्म कि लाइनअप, हाँ ये भी दिक्कत है। और वॉकर इतना ज्यादा वॉश हो गया ना इस साल नहीं रोक सकता वो विनीशियस को, ये तो मुझे दिख गया है। हम्म। हम्म। सो यू विल, ऑफ कोर्स, आई थिंक एडिसन फिट हो जाएगा तब तक, सो एडिसन इन गोल। हाँ राइट बैक? एडरसन राइट बैक खेलेगा तो वॉकर ही, अगर सिर्फ यूसीएल के उस मैच की बात करें तो वॉकर ही खेलेगा। सिर्फ यूसीएल क्योंकि के? हम उम्मीद कर भाई मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ उनके 3-4 प्लेयर येलो पे है, मतलब कि कैसे भी करके फ्रस्ट्रेट करके, अगर उन जैसे बेलिंगम हो गया, चुआमेनी हो गया, और शायद उनको कौन है, सेकंड लेग से तुम सस्पेंड करवा विनीश, दो। हाँ। हाँ मतलब एक येलो, और फिर होम पे और इतने सारे अगर प्लेयर उनके नहीं होंगे, लेकिन अगर एक दो भी हो जाते हैं कुछ, तो हम्म विनीशियस को फ्रस्ट्रेट करना वो है ना आसान थोड़ा। हम्म। ये सेंटर बैक पेयरिंग? है, रूबेन डियास और वो खेलेंगे, स्टोन्स खेलेंगे। अब खेल जाएगा पूरा लाइनअप एक साथ। पेप अभी तक नहीं खिला रहा था इस साल, पिछले साल भी हम डियाज एंड स्टोन्स? अप्रैल, हाँ
पिछले साल भी अप्रैल तक हम ऐसे ही थे कि इस बार सिटी ने फॉर्म नहीं पकड़ा है। इसी इसी मंथ से हमने अच्छा खेलना शुरू करा था, तो मैं होप कर रहा हूँ कि अब वो अपना जो ये 19-20 दिन करके, जैसे उसने वर्ल्ड कप में ओवर थिंकिंग करके एक साथ बिल्कुल एक ब्रह्मास्त्र बना दिया था, कि इन 20 दिन में वो वही करे और बेस्ट प्लेयर खिलाए। आके को लेफ्ट बैक खिलाए, रॉड्री, डे ब्रुयना और कोएचिच की तीनों मिडफील्डर खेलें, और सामने हालैंड, बर्नार्डो और ग्रिलिश खेलें, और ग्रिलिश अगर इंजर्ड है तो फोर्डन खेल जाए उधर। ओके ओके। तेरे हिसाब से फोर्डन शायद से बेंच हो सकता है। काफी लोग चाहते हैं फोर्डन खेले, वो तो चल उसी दिन पता चलेगा कि पेप के दिमाग में कौन सा जादू चलता है। मैं चाहता हूं मैं खेले, पर ना वो दो इतने ज्यादा अटैकिंग हो जाते हैं ना। लिवरपूल वाले गेम में देख लिया, मिडफील्ड कंट्रोल ही नहीं रह जाता, बिल्कुल सिर्फ भागते रहो इधर से उधर। बट रॉड्री, अगर तू एक बार सोच कि मान ले डे ब्रुयना एंड फोर्डन दोनों खेलते मिडिल में, रॉड्री के साथ अगर स्टोन्स आ जाता है सॉर्ट ऑफ एक सूडो डबल पिवट बनाने के लिए, तेरे को लगता है वो काफी नहीं होगा? बिकॉज इसलिए मड्रिड को तुझे वही, एटलीस्ट फर्स्ट लेग पे तो, चल फर्स्ट लेग आई कैन इमेजिन बर्नाबाउ पे है तो यू कुड बी अ लिटिल कंजर्वेटिव। हाँ वही तो मैं उसी गेम की बात कर रहा हूँ। क्या कहते हैं, घर पे तो हम पता नहीं 6-7 पता नहीं कितने सालों से हारे नहीं है। मैं जब से देख रहा हूँ तब से तो नहीं हारे हम। मैंने अपने आप को लास्ट बार शायद मोनाको के अगेंस्ट हारते हुए देखा था। तो इतना तो मेरे को कॉन्फिडेंट है कि घर पे एक्स्ट्रा टाइम पे भी चला जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बर्न अच्छा खेल रहे हो बर्ना। एक तो मैड्रिड का पता नहीं है, लाइप्जिग वाला गेम देख के लगता है कि कभी बाहर हो जाएंगे, और और किसी हमारे अगेंस्ट फिर हमारे लेवल का खेलने लगते हैं। दैट्स ट्रू। वही तो। लाइफ रूल सेज, एक बात बता, लेफ्ट पे डोकू और ग्रिलिश इस फिक्सचर के लिए, इफ बोथ आर फिट। फिट हो गया है, ग्रिलिश आज भी खेलेगा, हाँ। मिनट्स मिलेंगे उसको। और वो इंजर्ड होने से पहले भी बहुत अच्छा खेलने लग गया था, तो बहुत बुरा लगा था मैं। तो भाई वही है हमारा, वो कंट्रोल देता है ना, क्योंकि वो पीछे इतना पीछे तक जाके इतना वो डिफेंसिवली हेल्प करता है, वर्क रेट इतना देता है वो। थिंक ग्रिलिश एक बिग गेम प्लेयर तो है फॉर श्योर मैन, हाँ फॉर श्योर। ओके, वो लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज और भी लोगों को आना है अभी, तो मैं तुझसे पूछ लेता हूँ। एग्रीगेट 4-3। 4-3 सिटी। हाँ मतलब बैक कर फोर रहा हूँ मैं थ्री अपनी टीम को। क्या फोर पता थ्री भी। सिटी मुझे तो लगता है एंड कि दोनों प्रेफरेंस। टीम हाँ बोल। बहुत गोल मार सकती, मुझे लगता है दोनों टीमें बहुत गोल मार सकती है। मैड्रिड में दम है हमको आउटस्कोर करने का, मतलब हम इतने ज्यादा डिफेंसिवली खुले हुए हैं ना, हमसे एक गोल ज्यादा मार सकती है वो। एंड हम्म, क्योंकि तेरे मुंह में यूजुअली घी शक्कर होती है, आर्सेनल बायर्न का क्या लगता है तुझे? बस एग्रीगेट। मुझे पता है क्या, मुझे लगता है कि आर्सेनल निकाल लेगा ये वाला गेम। पर चाहे हम जाएं या फिर क्या कहते हैं मैड्रिड जाए, उनसे पक्का मतलब बाहर हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगी पहले। सेमीज, अब मैं सेमीज ये आर्सेनल की सीलिंग हो जाएगी इस मतलब सीजन। एज अ आर्सेनल फैन तुमको लगता होगा कि देखो सिर्फ 2 गेम बचे हैं, सेमीफाइनल और फाइनल, जो कि अगर मैं भी होता ना, मेरे को भी लगता था पिछले साल तक। लेकिन हम इतने सालों से वो कर रहे हैं ना, पिछले साल हम क्या कहते हैं, पिछले साल जीते हैं सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर्स, इतना बाहर हुए हैं ना। तो इतना मुझे पता है, इतना आसान नहीं है। लगता है दैट्स कि ट्रू। सिर्फ 5 ही गेम बचे हैं। बट इट्स नॉट दैट सिंपल। फेयर इनफ ब्रो, हाँ फेयर इनफ। ठीक है यार मयंक, थैंक्स फॉर जॉइनिंग यार, लवली टू टॉक टू यू एज यूजुअल। विनय भाई, ओ विनय भाई, लीव ओके कर दूं ओके। ना मैं? हाँ हाँ, आप लीव कर लो, लीव कर लो। विनय भाई, आई एम अबाउट टू ऐड यू। रेडी हो? थम्स अप कर दो। हाँ, ऑल रेडी, ऑल राइट। डॉक्टर विनय वर्मा भाई, मेंबर्स ऑफ द चैनल, आई हैव सीन यू ऑन डिस्कॉर्ड एज वेल। आपका थोड़ा सा शायद से साउंड आ रहा है, एक बार माइक, एक बार कनेक्शन चेक कर लो। जस्ट से समथिंग। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है विनय भाई। नहीं नहीं, इट इज म्यूटेड, सो मे बी चेक योर कनेक्शन इनटू योर लैपटॉप वंस। एक बार सेटिंग्स पे जाओगे और ऑडियो पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ना एक माइक वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उधर सेटिंग्स पे एक बार चेक करो। टिल देन मैं थोड़े से चैट ले लेता हूँ, आप एक बार चेक कर लो कि आपका होता है या नहीं, ठीक है? ओके, आई थिंक मिलिटाओ, आई थिंक what Militao Madrid, without Militao Madrid has less chances to progress. Okay, doesn't matter who's coming, Barca lifting the trophy at Wembley, says SSP. uh, all नहीं हो रहा, एक बार आप ट्राई कर लो, I'll get another guest on तब तक, और यू कैन कम फ्रॉम योर फोन ऑल्सो। लैपटॉप छोड़ दो, आप फोन से आ जाओ विनय सर, ठीक है? I'll wait for 2 minutes for you.
Dr. Arey, relax, bhai. Let me in, says Ashish. No, not yet. 10 to loading, Daksh bhai. कोई बात नहीं यार, टीजी वाइपर इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला है। लेस्टर वाला गेम आप जीत जाओगे उससे भी अच्छे से, डोंट वरी। डोपा भाई को बुलाओ, डोपा भाई अगर दिखेंगे चैट में तो उनको भी लिंक भेज दिया जाएगा, नो इश्यूज व्हाटसोएवर। Madrid jersey looks better on Daksh than Arsenal. कह रहा है वकार, थैंक्स वकार। वकार, व्हाई डोंट यू जॉइन इन मैन? तू भी आके कुछ बोल दे। ऐसे तो चैट में बोलता रहता है कि नहीं ले रहे, आजा तू भी आजा। Dr. Vinay, when you're ready, just give me a thumbs up, huh? I'll keep an eye on you. Are you ready? Okay, okay. We are winning, it says stoicism. Dr. Vinay has joined from his phone. All right, Dr. Vinay. I'll kick your laptop wala account. I'll get you on your phone now. Okay. Ready? Yeah, perfect. कैसे हो डॉक्टर विनय? हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, आप कैसे लग रहा है? All good, all good. First of all, thanks for supporting the channel. I know you've been here for a while, but it's Always. nice. It's nice to have you on. How are you feeling? Who are you supporting in this quarterfinals in the Champions League? क्वार्टर फाइनल्स में आर्सेनल एंड बार्सिलोना। Okay. Nice जब shout. तक आर्सेनल वर्सेस बार्सिलोना नहीं होता तब तक आर्सेनल एंड बार्सिलोना, Okay. और And जब जब आर्सेनल वर्सेस आर्सेनल बार्सिलोना हो वर्सेस गया था? बार्सिलोना होता है तब बार्सिलोना, बट आई डोंट थिंक दे वुड विन विद दिस आर्सेनल टीम दिस सीजन। Okay, that's a good shout, यार. Thank you so much, of course. What was your feeling जब आर्सेनल ने बायर्न को ड्रॉ किया था? थोड़ा PTSD हुआ था, एक्साइटमेंट हुआ था, क्या हुआ था आपको? यार जितने भी मेरे इनिशियल इयर्स थे जब आर्सेनल को देखना शुरू किया था 2009 से 2013-14, आर्सेनल वर्सेस बायर्न वाज ऑलवेज वन साइडेड। इट वाज एक आध गेम था जो हम होम पे जीत जाते थे, वरना ऑलवेज अ पीटीएसडी। वो 1-0 निकाल लेते थे। हाँ भाई, वही है यार, ऐसा ही होता था कि आप लोग बस खेलो। आई थिंक द ओनली गेम आई रिमेम्बर बीटिंग बायर्न वाज जब हम 2-0 जीते थे। उस पे भी हम आई थिंक अवे गोल्स पे हार गए थे। आई थिंक समथिंग लाइक अवे दैट गोल्स पे हारे थे और बायर्न वर इन कंट्रोल, चाहे हम जीते। 100%। उसमें भी ओजिल ने जो गोल मारा था, नॉयर ने क्या सेव किया था यार। उस टाइम एक्चुअली प्राइम नॉयर होता था। एंड नाउ वी आर फेसिंग द सेम टीम अगेन। ऑफ कोर्स उसमें रॉबिन नहीं है, रिबरी नहीं है, बट नॉयर है, मुलर है। आर यू कॉन्फिडेंट अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख? नॉट एक्चुअली, पीटीएसडी पीछा नहीं छोड़ता। But still I believe we can do much better than what we used to do. मतलब 4-1 3-1 इस तरह का स्कोर नहीं हो, it would be either 2-1 or 3-2, इस तरह का कुछ ना कुछ। would be really close matches both of the legs. Yeah, no, that's fair enough यार। Yeah. अभी जैसे हमारा मोमेंटम चल रहा है, जैसे लाइक काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आपने सिर्फ पोर्टो को पेनल्टीज पे हराया है, बायर्न से आप कैसे इतने कॉन्फिडेंट हो? फॉर एग्जांपल मेरे को जैसे कहते हैं, बट डू यू रियली बाय द आर्ग्यूमेंट दैट आर्सेनल वर रियली बैड अगेंस्ट पोर्टो, और डू यू थिंक कि नहीं, आर्सेनल डू यू थिंक आर्सेनल वर बैड अगेंस्ट पोर्टो, और डू यू थिंक नो वी डिड आवर जॉब, इट वाज अ डिफिकल्ट गेम बट वी फाउंड अ वे टू विन? I think सबसे पहले लोग ना पोर्टो को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उनके टैग किसी ने देखा नहीं है पोर्टो को खेलते हुए, लेट्स बी रियल। वो बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उनके प्रेशर, उनके टैक्टिक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फैंस को नहीं पता थे, तो इसीलिए पोर्टो अंडरडॉग्स थे। बट दे वर रियली अ गुड साइड। दे ब्लॉक्ड अस, दे ट्राइड टू क्रैम्प आवर मिडफील्ड रियली वेल। उसके बाद भी वी डिड आवर जॉब। लाइक ठीक है, फर्स्ट गेम में जो एक गोल भी खा लिया, दैट वाज लेट्स से a lapse of concentration, let's say unlucky, let's say a really good strike, whatever. But उसके अलावा we were in control of the second game, we were in control of majority of the first game. So we controlled the game really well. तो ऐसा कभी नहीं लगा कि आर्सेनल आउट ऑफ द कंपटीशन और आउट ऑफ द गेम एनी टाइम। ठीक है, we could not finish our chances जो कभी कभी हो जाते हैं, but still we managed to win a penalty shootout. और जब भी इस तरह के मैचेस होते हैं, इस तरह के सिचुएशंस होते हैं और आप जीत के आते हो, तो वो मेंटेलिटी जो कहते हैं कि आर्सेनल के पास मेंटेलिटी नहीं है, आर्सेनल के पास एक्सपीरियंस नहीं है, आई थिंक दीस काइंड ऑफ मैचेस, दीस काइंड ऑफ फाइनल्स, दे आर द वंस जो मेंटेलिटी लेके आते हैं। या वो 100%। आई थिंक इस विन से जो पोर्टो के ऊपर हुए, काफ़ी मेंटल, लाइक आर्सेनल का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि क्रंच मोमेंट पे मेंटालिटी दिख जाती है कि वो क्रम्बल कर जाते हैं। लास्ट सीजन का भी बॉटलिंग वगैरह जो होता है, and this season I think this game gives us a lot of confidence to the fact कि अगर tough game हुआ, maybe things might not go completely our way over 180 minutes, but
in the right moments, if we stick through, we can probably do something. And I think, जैसे अभी किसी ने comment किया था that I don't fear Arsenal, I respect them. मेरा भी same है. I don't, बायन की हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, बट आई डोंट फियर देम as much as I mean, I respect them. I respect them a lot because they are one of always the three favorites to win the Champions League, हमेशा. And I think थोड़ा सा respect तो we have to give them. But अब fear में नहीं खेल सकते against Bayern Munich. उल्टा मैं आपकी दूसरी टीम की तरफ आता हूँ, बार्सिलोना. काफ़ी अप एंड डाउन सीजन गया है. ला लीगा में there has been trailing. Your manager is leaving at the end of the season. How have you made this Champions League run? Because Napoli में first leg में draw हुआ था, but you missed a lot of chances. Second leg में you beat them, and then now you're matched up against PSG. Happy with the draw? मतलब बार्सिलोना के अगेंस्ट आई थिंक डॉर्टमंड के अलावा कोई भी टीम आती, you have to be happy or you have to be sad, whatever, it's all the same. It's the quarter final of the Champions League. बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. हाँ, सिटी आ जाती या मैड्रिड आ जाती, then that's a different level. You are definitely down on the odds. But बाकी कोई भी टीम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगेन बायर्न पीटीएसडी के अलावा. और दूसरी चीज ये है कि बार्सिलोना को अगर ये सीजन जब हुआ था या लास्ट सीजन जब था, जब फाइनेंशियल पूरा ड्रॉबैक्स था, स्क्वाड का आता पता नहीं था, हम इस सीजन हमारी सबसे महंगी साइनिंग, बार्सा की सबसे महंगी साइनिंग 3 million सेंट्रल मिडफील्डर कॉल्ड ओरियल रोमियो है. तो अब जिसको खिला भी नहीं ना चैंपियंस लीग में, substitution में जैसे जैसे आया. Yeah, he's come on as a sub. In fact, I think Javi ने तो सर्जी रोबर्टो को ज्यादा ट्रस्ट किया है when he's come on as a sub in fact also as well. तो इतनी खराब स्थिति में भी हम क्वार्टर फाइनल्स तक जैसे तैसे आ गए. ठीक है, नापोली वर आल्सो नॉट वेरी गुड, बट हम जैसे तैसे आ गए हैं. आई थिंक दैट्स अ जॉब वेल डन टू जावी. इसके आगे नहीं पहुंचते तो ऑनेस्टली एज लॉन्ग टर्म फैन आई डोंट थिंक मुझे बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन. लास्ट 2 बार से हम राउंड ऑफ 16 क्लियर नहीं कर रहे थे, यूरोपा में रेलीगेट हो रहे थे. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड रन. इसके आगे अब पीएसजी है तो मामला थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है. हिस्ट्री जो आती है, नेमार ट्रांसफर सागा, रामोंटाडा, अभी डेम्बेले आ गया है तो डेम्बेले का डेम्बूज. ट्रू एंड मेसी के साथ जो हुआ, वो सारी चीजें तो आपको देखनी पड़ेगी. डेम्बेले, मेसी, नेमार, देयर सो मच हिस्ट्री देयर. रेमोंटाडा वाली बात जैसे आपने कही थी, सही है. कुछ लोग कहते हैं बार्सा इज ऑलरेडी, उनका path to final is secured. Just beat PSG, the path to final is secured. Do you think Dortmund या एटलेटी वाला गेम कोई प्रॉब्लम ला सकता है आपके लिए? डॉर्टमंड और एथलेटिको मैड्रिड ऐसी टीम्स हैं जो आपके बेस्ट टीम्स को भी ऑन देयर डे 1-0 से हरा देंगे. They won't attack for 160 170 मिनट्स. आखिरी के 5-10 मिनट वो कुछ ऐसा कर देंगे that you will say ये क्या हो गया. Even worse, एथलेटिको मैड्रिड की ऐसी मेंटेलिटी है, वो 0-0 दोनों गेम्स में जाने देंगे और आखिरी में पेनल्टीज पे ले जाएंगे, बिकॉज दे आर रियली वेल ड्रिल्ड टीम ऑन पेनल्टीज. दे आर वेरी वेल ड्रिल्ड टीम्स. Okay, last 2 questions before I let you go, because there's still 6 people at least in the queue. So Arsenal Bayern, give me the aggregate. Barca PSG, give me the aggregate. As an Arsenal fan, I would like 3-2 to Arsenal. 3-2 to Arsenal. Let's go. Barcelona PSG, I think it would be like a 3-1 for PSG. 3-1 to PSG. Mbappe, come on, man. You have to believe really in the Arsenal Barca final, man. Come on. I don't know. It's tough. I think Xavi has done his job. Nahi bhi hota tha, I'm okay. You're okay with it. Fair enough. Dr. Vinay, man, thank you so much for joining in. Always big W's for you to joining. हाँ, बोलो. एक लास्ट चीज मैं ऐसा कभी ना पोएम्स लिख देता हूँ, तो यहाँ पर वेटिंग रूम में बैठे बैठे कुछ लिखा है. If let's hear it. क्वार्टर फाइनल्स की आड़ में दोनों टीम्स का कुछ जुनून कहेगा. Okay. एमिरेट्स और अलायंस में प्लेयर्स के पसीने के साथ साथ लाल खून बहेगा. Okay. किसी के हिस्से में हार होगी, लेकिन किसी के हिस्से में सुकून रहेगा. अरे भाई, बिग डब्स फॉर डॉक्टर विनय, मैन.
फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग दैट यू रोट इट सो इजीली एंड इतनी जल्दी से आपने वेटिंग रूम में बैठ के लिख लिया. थैंक यू सो मच मैन. Always appreciate the art and always appreciate all members. Yeah, thank you, Dr. Vinay. That was beautiful. Thank you. Let's hope Arsenal win it as well. Yeah. Yes. एंड में आर्सेनल वर्सेस बारसा हो फाइनल में, ताकि हम आपको वापस बुला सकें एंड देन आई विल टेस्ट योर लॉयल्टी अगेन. That would be ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग sure, इन. sure. थैंक यू सो मच. सी यू. Thank you so much. उमेश भाई रेडी. उमेश भाई ओके. उमेश भाई ने अनम्यूट कर दिया था अपने आप को. कैसे उमेश भाई? हेलो, एकदम बढ़िया. आप सुनाओ. मैं तो गुड यार. उमेश भाई आप पॉइंट्स ड्रॉप करो ना. अरे नहीं करेंगे यार, ऑलरेडी कर दिया है सिटी का. अरे वो तो पॉइंट. अरे चलो दैट्स फेयर एक्चुअली यार. देखो दैट कुड हैव बीन अ विक्ट्री फॉर यू. वी ऑल नो अबाउट दैट टैकल, अबाउट दोस टैकल्स एंड एवरीथिंग. मैं ऑलरेडी बिफोर आई टॉक टू उमेश भाई मैं क्यों आगे का बता देता हूँ. उत्कर्ष इज नेक्स्ट, शांतनु इज नेक्स्ट. उसके बाद पहले उत्कर्ष, फिर शांतनु, देन आई विल से अंकुश भाई, then Raghav, and then Ayush. Okay, so this is the queue right now. Okay, Umesh bhai. Umesh is a Liverpool fan for all asking bhai. Umesh bhai, first of all, congrats on your very devastating victory in the Europa League. And आपका draw भी अच्छा हुआ है. Your bracket is also very nice. You face Atlanta and then the winner of Marseille and मार्से एंड बेनफिका. देखो मतलब उमेश भाई डजंट इवन केयर. ही नोज ही इज गोइंग टू, उसकी उनकी टीम जा रही है डबलिन में. प्लस यू आल्सो प्ले इन द यार, एफए कप एज वेल. उमेश भाई कैसे हो, कैसे हो? ओके उमेश भाई, योर रिएक्शन व्हेन यू सॉ द चैंपियंस लीग ड्रॉ फ्रॉम अ लिवरपूल पर्सपेक्टिव. हाँ, मुझे तो अच्छा लगा यार. मतलब मेरे को चाहिए था कि डर क्लासिकर भी हो, एल क्लासिको भी हो और मैन सिटी आर्सेनल भी हो. अच्छा अच्छा. पर नहीं हो. बट कोई नहीं, आर्सेनल मैन सिटी सेमीफाइनल में हो जाएगा. 4 फिक्सचर्स ऑफ कोर्स, क्वार्टर फाइनल है तो 4 फिक्सचर्स ही होंगे. मैन सिटी, रियल मैड्रिड, आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख, Atletico, Dortmund, which I think is a very balanced, and PSG Barca. Which 2 fixtures आपकी नजर 2 fixtures उनमें से चूज करो, किस पे होगी? मैड्रिड सिटी एंड आर्सेनल एंड बायर्न. Okay, so मैड्रिड सिटी से हम स्टार्ट करते हैं. वे ऑफ कोर्स आप सिटी के साथ टाइटल रेस में हो विद अस इन सिटी. रियल मैड्रिड के साथ आपका ऑफ कोर्स काफी ज्यादा हिस्ट्री भी है. Who are you rooting for? Because I'm sure you don't like either of those teams. हाँ, बट मैं चाहता हूँ कि सिटी और आर्सेनल ही जाए आगे. You want City and Arsenal to go through and then भिड़ जाओ एक दूसरे से, ताकि सेमीफाइनल में अगर सिटी और आर्सेनल होंगे तो उस टाइम पे क्रंच मैचेस प्रीमियर लीग में. हाँ, तो हमारा ही फायदा है. और हम यूरोपा में है ना, तो वो भी बेनिफिट है. अगर बेनफिका वगैरह से हम लोग ने फर्स्ट लेग में क्लियर कर लिया, मतलब खत्म कर दिया टाई को, तो सेकंड लेग में बच्चे खिला सकते हैं ना हम लोग. या दैट्स फेयर. तो देखो भाई, लिवरपूल फैंस लाइक उमेश भाई ने तो मतलब अपना फुल आइंस्टाइन कैलकुलेशन लगा लिया है इसमें. He wants City to go through and Arsenal to go through. But let's check your ball knowledge, Umesh bhai. Who do you think is a very crucial player for both Arsenal and City? Because you're familiar with both teams now. Who is a very crucial player for City first versus Real Madrid? Kevin De Bruyne. You think Kevin De Bruyne will have a huge role to play? Of course, he will be there. Do you think Jude Bellingham, of course, another Liverpool favorite, do you think him being there in this tie changes the tie from last season? क्या उतना ही easy होगा सिटी के लिए आगे प्रोग्रेस करना, और do you think कुछ चेंज होगा? नहीं, मतलब इजी तो नहीं होगा, बट लास्ट सीजन से कंपैरेटिवली रियल मैड्रिड भी बेटर परफॉर्म कर रही है इस सीजन. तो इतना तो इजी नहीं होगा. और जूड बेलिंगम अच्छा है, बट मेनली विनीशियस ही है उनका जो गोल स्कोरिंग करता है ज्यादा. मतलब बेलिंगम भी करता है, बट जूड ज्यादा थ्रेट देता है. और वो वॉकर के साइड है, और इस सीजन वॉकर भी उतना अच्छा खेल नहीं रहा है. आई थिंक यू प्लेड. और सिटी की मिडफील्ड ज्यादा सुपीरियर है मैड्रिड से मेरे हिसाब से, क्योंकि केडीबी है, रॉड्री है. तो ज्यादा सुपीरियर है. That's fair. KDB, Rodri,
मयंक कह रहा था कि फोर्डन फर्स्ट लेग में नहीं खेलेगा. डू यू अग्री विद, और डू यू थिंक लाइक फोर्डन को तो खिलाना ही चाहिए उनको एट द सैंटियागो बर्नाब्यू? खिलाना चाहिए क्योंकि इस सीजन बहुत अच्छा खेल रहा है वो। Okay, when it comes to Arsenal versus Bayern Munich, Arsenal हाँ scraped past Porto. Now they are facing a big heritage team in Bayern Munich. I know you want Arsenal to go through, but from an unbiased perspective, who do you think has a slight edge in Arsenal versus Bayern Munich? आई थिंक आर्सेनल, Really? अनबायस ही Why? बोल रहा हूँ, आर्सेनल। Okay. हाँ हाँ, क्योंकि आर्सेनल लीग में तो बहुत अच्छा ही कर रही है। अगर वही फॉर्म कंटिन्यू करेंगे ना यूसीएल में, तो आराम से आगे जाएंगे, क्योंकि टूकल से भी उसके प्लेयर्स का उतना अच्छा रिलेशन नहीं है अभी, तो वो भी अफेक्ट तो करेगा ही। और किमिक वगैरह को वो कभी स्टार्ट कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, टिलिक कभी स्टार्ट कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, तो फर्क तो पड़ेगा। और बायर्न उतने फॉर्म में भी नहीं है, तो आराम से आर्सेनल को जीतना चाहिए। अगर फर्स्ट लेग में अगर 2-0 की लीड लेके जाएगी ना आर्सेनल, तो आराम से जीत जाएगी। I know. I also concur with that point. I think 2-0 की लीड अगर हम लेके चलते हैं एट द आलियंस, मुश्किल होगा गेम. आई थिंक वे डिफेंसिवली हमारा गेम प्लान इतना सॉलिड हो सकता है कि हम शायद से एक सेकंड लेग भी निकाल लें. देखना पड़ेगा. लुक, इट्स नॉट गोइंग टू बी, ड्रॉ भी कर लिया तो चलेगा। और फर्स्ट लेग में तो बायर्न फैंस भी नहीं है एमिरेट्स पे। That's true. That's true. That's going to be a big factor as well. उमेश भाई, लिवरपूल का जब क्लॉप वाला जर्नी शुरू हुआ था, लाइक आई थिंक विद इन फर्स्ट 2-3 years you were in back to back finals, right? In the हाँ Champions हाँ, League under Klopp. फर्स्ट सीजन में यूरोपा फाइनल में थे और फर्स्ट सेकंड सीजन सीजन यूरोपा में फाइनल यूसीएल थे, था। एंड उसके बाद आप चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंच गए थे. हाँ एंड उसमें you faced Real Madrid, and then we all know what happened with Karius that time. It is what it is. हाँ बट एक टीम जो काफी टाइम तक या फिर बहुत टाइम बाद चैंपियंस लीग फाइनल में जाती है, बिकॉज लिवरपूल का मुश्किल था उस टाइम पे. हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर प्लेयर्स टू एडजस्ट, बट डिफिकल्ट टीम से जीतने के बाद भी, बिकॉज आई एम श्योर उस लिवरपूल वाली जर्नी में भी दे हैड टू फेस सम डिफिकल्ट टीम्स. डिफिकल्ट टीम्स को बीट करने से मेंटालिटी पे क्या फर्क पड़ता है? मतलब जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे उस टाइम पे हमारी टीम इतनी नई थी 2017-18 वाले फाइनल में, तो और कैरियस ने कभी इतना बड़ा मैच खेला भी नहीं था, और उसके पहले तो वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था. तो मेंटालिटी में तो फर्क पड़ता है. अभी जैसे आर्सेनल में कैसा है कि आर्टेटा ने कभी पहले इतना बड़ा फाइनल या इतने बड़े स्टेज पे मैनेज ही नहीं किया. क्लॉप ने किया हुआ है ऑलरेडी. एटलीस्ट हाँ, क्लॉप क्लॉप ने, डॉर्टमुंड ने मैनेज तो किया था. हाँ, तो उससे भी फर्क पड़ता है, मैनेजर से भी फर्क पड़ता है. अभी आर्टेटा को भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, वो भी आगे चल के एलीट ही बनने वाला है क्लॉप जैसे. No, agreed, 100% agreed. What do you think is the maximum? मैनेजर से फर्क पड़ता है मेंटालिटी. I agree. Yeah, manager will be a huge shout. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टूकल से लेड है ना बायर्न म्यूनिख. I know काफी लोग कहेंगे आउट ऑफ फॉर्म है, बट काफी उससे फर्क पड़ेगा. हाँ, एक, what do you think the maximum in this season's UCL can Arsenal reach? Because प्रीमियर लीग भी है, उस पर भी ध्यान देना तो पड़ेगा, और स्पेशली सिटी के साथ है 31 मार्च को. उसके 9 दिन बाद आप खेलोगे चैंपियंस लीग, बट उन 9 दिन से पहले आप 3rd को भी खेल रहे हो प्रीमियर लीग, 6th को भी खेल रहे हो प्रीमियर लीग, फिर आप 9th में भी खेलोगे चैंपियंस लीग. व्हाट इज द सीलिंग? ये क्या आर्सेनल टीम फाइनल तक जा सकती है? कैन दे विन द होल थिंग? कैन दे जस्ट रीच द सेमीज एंड सेमीज में हार जाएंगे? व्हाट डू, और या फिर क्वार्टर्स इज द हाईएस्ट दे कैन गो? आई वुड से आर्सेनल सेमीज तक जाएगी. आर्सेनल सेमीज क्योंकि तक बायर्न को हरा देंगे, बट वहां पे मैड्रिड या सिटी आएगी ना, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा. अगर समझो कि मैड्रिड आ जाती है, तो ये प्लेयर्स ने कभी बर्नाबाउ पे जाके या फिर एथिहाद पे भी यूसीएल लेवल का मैच नहीं खेला कभी. तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो सेमीज तक तो रियलिस्टिकली जा सकता है. दैट्स ट्रू. या नो, आई थिंक आलियांस पे भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो है ही नहीं इन प्लेयर्स में से किसी को. हाँ, बट यहाँ पे फर्स्ट लेग एमिरेट्स पे ना, तो एडवांटेज इसलिए ज्यादा है. या ओके, दैट्स फेयर. उमेश भाई, बिफोर आई लेट यू गो, 5 मिनट्स इधर भी हो गए हैं. टेल मी एग्रीगेट फॉर सिटी मैड्रिड एंड आर्सेनल बायर्न. सिटी मैड्रिड 3-2 सिटी.
Oh, you think City will go through? Okay. हाँ, और आर्सेनल बायर्न में 2-1 आर्सेनल. 2-1 Arsenal. Do you think it'll be a low scoring tie? हाँ, मतलब डिफेंसिवली आर्सेनल अच्छी है. हाँ, तो you think it'll be something like 2-0 होम पे हो जाएगा एमिरेट्स पे, but 1-0 बायर्न आलियांज पे निकाल हाँ. लेगी, but won't be enough. Fair enough भाई, fair enough, fair enough. ठीक है उमेश भाई, thank you so much for joining in. Okay, thank you. Thanks for joining in. Thank you so much. Um, next is मैंने क्या बोला था? उत्कर्ष, right? उत्कर्ष फिर शांतनु, फिर देखते हैं, फिर we'll redo the order if somebody wants to join in. उत्कर्ष भाई, are you ready? Unmute कर दो अपने आप को अगर if you're ready. Okay, he's ready. कैसे हो उत्कर्ष भाई? Chelsea fan. हेलो 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 How are हेलो you? आ रही आवाज आ रही है क्लियरली? Perfect, perfect. हाँ हाँ ठीक है. हेलो हेलो. हाँ कैसे हो? बस मैं तो ठीक हूँ. आप बताओ. ठीक हो? अब मैं भी यूसीएल बढ़िया. का है. हाँ. हमारे तो हम्म, यहाँ पे यूसीएल बात हो रही है, बट यू आर ऑल्सो प्लेइंग अगेंस्ट लेस्टर सिटी यार. यू आर देयर फॉर हाँ another हाँ cup competition ऐसे under कब. Pochettino. हाँ मतलब हमारे लिए वो है क्या बोलते हैं ये डू और डाई चल रहा है हमारा एफए कप में. हम्म. यूरोप का तो वही चांस है हमारा. तो हमारा तो हम्म. डू और डाई है कल बिल्कुल. हम्म, या वो 100% कल तो आप लोगों का डू और डाई है, बट डू और डाई हमारे लिए भी हो सकता है. बायर्न म्यूनिख हाँ वाला. बायर्न व्हाट, म्यूनिख. गिव मी टू फिक्सचर्स यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. एक आई थिंक आर्सेनल बायर्न ऑफ कोर्स. और आई थिंक रियल मैड्रिड मैन सिटी रियल मैन मैड्रिड. सिटी. या ये दोनों ही. हाँ आई थिंक मोस्ट एक्साइटिंग यही है. आई थिंक लेकिन मुझे आई लगता है आई एग्री. अंडररेटेड आई हाँ, थिंक पीएसजी पीएसजी बारसा आई बार्सा इज थिंक वेरी अंडररेटेड. अंडररेटेड. तो एक एक काम करते हैं, हम हम्म, आपसे बात करेंगे. We'll talk about Bayern and Arsenal with you and Barca and PSG. For ठीक ठीक. Bayern वाला because Thomas हम्म, Tuchel, yeah, you're familiar with him, हाँ थॉमस टुक ऑफ कोर्स. ऑफ है ना? कोर्स. Okay, हम्म, how have you taken Thomas Tuchel का Bayern का tenure as a manager? You're familiar with him. Do you think this is हम्म. usually how he is as a manager, या फिर कुछ है आपको लग रहा है Bayern में खलबली गड़बड़ सी? मतलब उसमें एक टेंडेंसी तो है थोड़ा. मतलब वो हम्म. थोड़ा सा मतलब बहुत जो होता है ना ईगोज के साथ थोड़ा सा उसका रहता है. क्या बोलते कन्फ्लिक्ट थोड़ा नॉर्मली रहता ही है. आई थिंक हम्म. बायन बायन तो भी थोड़ा वैसा ही क्योंकि उनका वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं टॉप लेवल. हाँ वही टॉप लेवल एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग. तो थोड़ा सा आई थिंक उसके प्लेयर्स भी के साथ भी नहीं रहा ज़्यादा अच्छा. पर किमिक हम्म. उसको पसंद नहीं है. उसको हम्म. पसंद है रोबस्ट. एक रोबस्ट मिडफील्डर डीएम. लेकिन जो Right. किमिक थोड़ा मतलब एग्जैक्टली नहीं है वो. तो Right. उसको वो चाहिए जो उसको मिला नहीं है. जैसे हम्म. पॉलिनिया. अब हम्म. पॉलिनिया लास्ट Yes. डे लास्ट डे फाइनलाइज नहीं हो पाया. True. तो वो आई थिंक इश्यू तो रहे हैं. हम्म, That's true. Yeah, no. He wanted some players. He wanted Rice as well, by the way. He wanted हाँ Declan Rice, जो राइट. Bayern म्यूनिख को चाहिए था. नहीं मिला उनको. हम्म, They wanted Mason हाँ Mount at one point. वो नहीं मिला उनको. हाँ. I think Kai Havertz के लिए भी उन्होंने शायद से ट्राई किया था. I'm not really sure. But they हाँ did आई end up थिंक. getting हाँ. Harry Kane. They did end हम्म, up getting Eric Dyer, which चलो लोग कहेंगे Eric Dyer, but he's हाँ used एरिक them. डायर. हाँ Yeah. हाँ. ठीक है कार्तिक भाई. I'll take शांतनु. अब से हम दो लोग एक साथ ले लेंगे जिनको मैं एटलीस्ट जानता हूँ. लाइक आई नो शांतनु एंड I'll take हाँ, अंकुश भाई टुगेदर इसके बाद. ठीक है. हाँ, So हाँ, हाँ. yeah, so Thomas Tuchel is like that. Okay, give me reasons why you think. First of all, you tell me between Arsenal and Bayern, who do you think can go through? Who has a better chance of going through? आई थिंक आर्सेनल का चांस है. मतलब आई You थिंक think आर्सेनल का चांस Arsenal का काफी. chance? हाँ Hmm. आर्सेनल का चांस है आई थिंक. क्योंकि आई थिंक Okay. बस ये है कि आपको अपना टॉप गेम पे रहना है आर्सेनल को. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉप गेम Hmm. कि बायर्न चाहे कैसे भी हो ना आपको. आप कितना भी उनको कह लो कि वो लोग नहीं है कि डाउन एंड आउट नहीं है कभी भी. मतलब वो Agreed? मतलब हमेशा रेडी है वो लोग जीतने के लिए यूसीएल और खासकर यूसीएल. क्योंकि उनका Hmm. पीएच वही मुझे लगता है. हाँ. Okay. हम्म, Give me two reasons at least. Two हाँ. reasons why Bayern can definitely go through from Arsenal. So I think Bayern can go through. I think of course they have the quality or the individual quality is there. Of Hmm. course, so मतलब कि Kane, Musiala, Kimmich is there, Hmm. Goretzka, Sane. So I think they have too much quality. I think that I think they can go through. I think they Hmm. have too much quality for us. So हाँ, तो वो मुझे लगता है. सेकंड मुझे लगता है कि अब मतलब आर्सेनल के बारे में बहुत लोग ये बोल रहे थे कि उनकी हेरिटेज नहीं है.
वो नहीं है, लेकिन आई थिंक वो उस टाइम पे यूज़ नहीं हुआ, बट आई थिंक बायर्न का खासकर सेकंड लेग जो जो अलियांज अरीना पे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फर्स्ट अगर फर्स्ट लेग में वो ड्रॉ भी करा लें, तो आई थिंक सेकंड उस पे वो जा सकते हैं। अलियांज में वो लोग काफ़ी मतलब एक फोर्स है वो, जिसको मतलब मुश्किल रहता है उनके साथ। एक सेकंड वकार भाई, आपको आना है अगर शांतनु के साथ तो ज्वाइन कर लो डिस्कॉर्ड लिंक, आई विल ऐड यू टू द क्यू, बट आई डोंट सी यू इन द क्यू, दैट्स द थिंग। वरना आ जाओ वकार भाई। Okay, second leg यार underrated fixture you called Barca PSG. A lot of people think, at least जब draw announce हुआ था, it was like Wembley we are coming. मेरे को याद है मुक्तेश ने भी ट्वीट किया था Wembley we are coming. Um, do you think it's as straightforward कि Barca is favorite, or do you think PSG is आई being थिंक underrated by teams a lot? आई थिंक काफ़ी इक्वल मैच है। आई थिंक इक्वल मैच है काफ़ी, मतलब पीएसजी को थोड़ा, नहीं पीएसजी को मतलब मैंने भी किया था। मैंने भी जब आया था मुझे लगा था पीएसजी इतनी अच्छी नहीं है कि बार्सा कैन कैन गो थ्रू, बट आई थिंक नहीं। आई थिंक मैंने जब सोचा तो मुझे लगा काफ़ी इक्वल है। Hmm. मतलब पीएसजी की काफ़ी इक्वल, जैसे उनके अटैकर्स के ऑप्शन Right. बहुत हैं। आई नो बहुत सारे वर्क नहीं किए हैं, जैसे Hmm. मुआनी Hmm. और क्या बोलते हैं रामोस वर्क नहीं किए हैं उतना। पर आई Hmm. थिंक on their day they can do that trick I think for them. तो आई थिंक वही है कि आई थिंक काफ़ी इक्वल मैच। Okay. हुँ, Give me हुँ, हुँ। 3 important players from Arsenal who will be हुँ, crucial to beat Bayern Munich. आई थिंक आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक राइस विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक, बिकॉज़ Musiala के against जितने especially. हाँ, मुसियाला और जितने अटैकर्स हैं बायर्न में, जितने अटैकर्स क्वालिटी है, अटैकर क्वालिटी, उसमें आई Hmm. थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक गैब्रियल भी, मतलब Hmm. जो डिफेंस लाइन है, वो बहुत सबसे ज़्यादा आई थिंक वही मेन इम्पोर्टेंट है। आई थिंक अटैक में आई थिंक आप कर लोगे, तो Hmm. आपका मार्टिनेली, हैवर्ट्ज़ भी, साका, Hmm. आई थिंक आई थिंक अटैक में इतना इश्यू नहीं हुआ, डिफेंस में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। कि बायर्न Hmm. का वही है मेन उनका Hmm. उनका वेपन वही है अटैक, वो वही ट्राई करेंगे वो करने का। Hmm. Okay, no, हुँ, that's fair. Give me the aggregates for हुँ, Arsenal Bayern and Barca हुँ। PSG. I think Arsenal Bayern, I think 2-1 Arsenal. Yeah, 2-1 Arsenal at Emirates, I think. Hmm. And I think PSG Barca, I think first leg will be a draw, I think. I like a 1-1, I think. Okay, first leg Barca Mm. PSG में you think it'll be a draw? हाँ, draw 1-1, yes, I think so. Second leg तो Mm. Barca के home पे है. Then हाँ, so I think then मुश्किल है, पर I think Barca can go through. I think I'll take a chance on Barca. I okay, know so it's very difficult. Many people, true. but I think they can do it. I think they can do it. Hmm. So you Especially think that they know that there's मतलब कि Dortmund Athletic क्या Atletico is if they are in the next in the semi-final, I think they can try to they will do you think they Barca can. can be finalists? Mm, I mean I think so. The Hmm. Dortmund and Atletico, yes, they are good teams of course. That you have seen that Atletico doing against Inter, Hmm. but I think Barca. I think yes, but Barca can do it. I think. Okay. I know it will Early be very shout. difficult, but it will be difficult. हाँ. Early shout. Who can win the Hmm. Champions League? Last question. I think Madrid. You I think think Real Madrid. Madrid. So Yeah, you they will go they'll through beat against Man City. City, then they'll beat Hmm. Arsenal because you think Arsenal will go through, and then Madrid finals has. में yeah, Uh, yeah, I heritage. I know it's a fairy tale. It's a fairy tale. I like El Clasico in final. I know that, and Yeah. I may be dreaming, but I think it can happen. There's a chance. Hmm. But I think there's a chance. It will, but I know it will be difficult. Of course, it's very Oh yeah, difficult. But 100%. but there's a chance. I think. Okay. Chalo. Thank you, Utkarsh bhai, for joining in. I will Thank you take for having other me. people Mm. on now. There's still a few people in. Thank you so much, Utkarsh bhai. Lovely talking to you Thank you as for having me. always. Chalo. I know. No, it's not that tired, yeah. It's just ki even if I give 5 minutes to everyone, we still have around 5-6 people in. And I इसके बाद मैं और कोई मेंबर नहीं लूँगा इनफैक्ट, बिकॉज इट विल बी a 2 hour stream एंड कुछ लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, सो लेट्स नॉट डू इट. शांतनु, आर यू रेडी? अनम्यूट कर दे इफ यू आर रेडी. इफ यू आर नॉट रेडी देन आई विल गेट राघव इन. ही इज रेडी. वाओ, what a moment bhai for my channel. The Shantanu is here bhai. The Shantanu is here. He is, guys, undoubtedly he is the most handsome member of the channel. मजाक भी नहीं कर रहा मैं. कैसा है आवाज आ शांतनु? रही है? हाँ, आवाज आ रही आवाज है. आ रही ऑफ कोर्स भाई, तेरी आवाज नहीं आएगी तो किसकी आवाज आएगी भाई? है? कैसे हो आप?
मैं तो बढ़िया, तू बता, तू कैसा है यार? हाउ आर यू फीलिंग? मैं तो डरा हुआ हूँ। तू डरा हुआ है? किस बात से डरा हुआ है तू? तुम्हारी तो यार, तुम तो अपोला पोला करते रहते हो। 14-14 अब 15-15 हो जाएगा। बारसा वाला पात मिल जाता तो बोल देता, अभी कैसे बोलूंगा। मैं तुझसे सिटी और रियल की ही बात करूंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स योर टीम ओनली। फेस रिवील यार, इफ ओनली मैन, बट ये चैनल के ना फिर subs will shoot up and it's not fair on other creators as well भाई। anyways, शांतनु, of course तूने बोला तेरी फट रही है। if not City and if not Dortmund, which other team would you love to face? PSG। PSG because of Mbappe या फिर what? नहीं, मतलब वो ओवरऑल अच्छी टीम नहीं है, बस एक एम्बाप्पे है उनके पास। डिफेंसिव भी वो अभी भी बहुत वल्नरेबल है। ओके, अभी इतने सारे लोग आए हैं, मयंक आया, लॉट ऑफ पीपल टॉक्ड अबाउट सिटी एंड रियल मैड्रिड। सब कुछ लोगों ने कहा कि डे ब्रुयना विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटी, रॉड्री विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्डन, उनका डिफेंस। हु डू यू थिंक इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टॉप सिटी दिस ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर नहीं हुआ था? आई थिंक चुआमेनी, क्योंकि लास्ट सीजन कार्लो ने मॉड्रिच और क्रूज को डीएम खिलवाया था और हम खुल रहे थे बहुत अच्छे से। चुआमेनी खिलाना चाहिए डीएम पे। चुआमेनी खिलाना चाहिए डीएम। व्हाट, एक बार मेरे को अपने तरफ से, इफ एवरीवन इज फिट, अज्यूमिंग जो लोग आने थे, जैसे तुम्हारा वो आना था, मिलिटाओ शुड बी बैक, कोर्टोवा शुड बी, इमेजिन दे आर फिट एंड दे आर रेडी, व्हाट इज योर आइडियल लाइनअप? लूनिन इन गोल, कार्वाहाल, Lunin in goal. रूडिगर, Yeah. You won't play Courtois? नो इजंट फिट। ओके, अच्छा, मैं कह रहा हूँ अगर सब मान ले है फिट तो हो छोड़ जाए दो। तो। हाँ, कोर्टुआ, ओके, हाँ, कार्वाहाल, रूडिगर, या, मिलिटाओ, मेंडी। हम्म, मिडफील्ड हाँ बोल, फेडे वाल्वेर्डे, मिडफील्ड या, फेडे, डीएम पे चुआमेनी, एलसीएम क्रूज और नंबर 10 जूड। नंबर 10 और जूड। अप टॉप दो Oh. और अप टॉप दोनों विनी और जोजेलो। इसमें तेरे को लगता नहीं ब्राहीम की कहीं जगह है, और डू यू थिंक ब्राहीम इज द बेस्ट ऑप्शन टू कम ऑफ फ्रॉम द बेंच ओनली? ब्राहीम इज द बेस्ट ऑप्शन टू कम फ्रॉम द बेंच, आई थिंक। मतलब उसने ऑफ द बेंच आके 7 to 8 गोल्स मारे इस सीजन। या, दैट्स ट्रू। इज देयर एनी पर्टिकुलर सिटी प्लेयर, लाइक ऑब्वियस तो हालैंड है ही है, डे ब्रुयना है ही है, मे बी फोर्डन भी है ही है, बट कोई ऐसा प्लेयर जो तेरे हिसाब से तेरे को लगता है कि सिटी के लिए बड़ा मुश्किल, मतलब सिटी का बहुत अच्छा प्लेयर है, वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दिस गाय? आई थिंक रॉड्री। या, रॉड्री क्यों इतना मुश्किल? रॉड्री अगर रॉड्री उनको ये करता है, प्ले मेकर है उनका, उनको डिफेंसिवली हेल्प करता है, तो उसका गेम अगर खराब होगा तो हमें हेल्प होगी बहुत। या, बिकॉज रॉड्री ने, आई थिंक सिटी के लिए, दे हैवंट लॉस्ट अ गेम विद रॉड्री इन द फुल कैलेंडर 80 ईयर। गेम्स, या 60 गेम्स ना भाई, कुछ ऐसा। या, डू यू थिंक इट्स अ डिसएडवांटेज फॉर यू कि फर्स्ट लेग सांटियागो बर्नाब्यू पे है, या फिर इसका तुम एडवांटेज निकाल सकते हो? नहीं, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड लेग बर्नाब्यू पे होता तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता। काने ट्रम्प टेट कह रहे ब्रो इज ऑलरेडी प्रेइंग फॉर दैट टाइम। पीछे घंटी सी आ रही थी ना इसलिए। हाँ, हाँ, बट हाँ, सैंटियागो बर्नाब्यू पे तेरे को क्या लगता है कि ओके चल, इवन दो इट्स अ डिसएडवांटेज, व्हाट डू यू थिंक इज द मिनिमम स्कोर लाइन यू शुड हैव इन द फर्स्ट लेग टू टेक टू द एटिहाद? 2-0 एटलीस्ट मिनिमम। ड्रॉ से काम नहीं चलेगा ना? नहीं, ड्रॉ ही हुआ था पिछले टाइम में। या, विनी एंड बेलिंगम मिसिंग द फर्स्ट लेग, ऐसा क्यों है? आर दे इंजर्ड और समथिंग? विनी बेलिंगम फर्स्ट लेग में येलो लेंगे तो सेकंड लेग मिस करेंगे, तो सेकंड लेग में एब्सेंट हो जाएंगे। अरे भाई, तेरे साथ ही आ गए वकार भाई। वकार भाई, नहीं, आवाज आ रही है? यस, परफेक्ट वकार भाई। पिछले टाइम में। या, एक वकार भाई, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द ड्रॉ? I think it's a easy draw for City. Easier draw for City, you think? No, I'm just kidding.
Favorites is Madrid for you? No, 52-48 for City. 50-48 for City. Okay. Just because we don't have a striker. Do you agree with Shantanu's lineup? If I everyone haven't is heard. fit, I didn't hear. Courtois, Carvajal, Hmm? Militao, उसके बाद रूडिगर, मेंडी, चुआमेनी, कामाविंगा, फेडे, नहीं, फेडे, सॉरी, चुआमेनी और क्रूज. हाँ सॉरी, फेडे, चुआमेनी, क्रूस, 10 पे जूड. जूड, आगे होसेलू एंड विनी. Rodrigo winning. You want Rodrigo आगे? No, it's not about what I want. I know Carlo what he's gonna do. नहीं, I'm asking about what you want. No, that's perfectly fine. Like होसेलू को try करना मतलब सेंस ही नहीं बनता है. Okay. When you haven't. Why would you think Rodrigo is better suited than Joselu? Because हमारा सिस्टम ही उस पे बिल्ट है पूरा. हमने इस सीजन की स्टार्टिंग से वही परफेक्टली वर्क किया है एंड वी हैवंट रियली ट्राइड होसेलू विथ विनीशियस. एंड अगर होसेलू को रख रहे हैं हम देन वी विल नीड फ्रांक गार्सिया. फ्रैंक गार्सिया तो यार मैंने कब से नहीं देखे लाइनअप पे. बट ऑब्वियसली अगेंस्ट सिटी यू कांट पुट फ्रांक गार्सिया. ऑफ कोर्स. शांतनु, तुझे क्यों लगता है कि होसेलू आना चाहिए? आई थिंक विनी और रोड्रिगो दोनों लेफ्ट साइड पे होता है और हमारा बॉक्स. हाँ, एक तेरी आवाज भी कट रही है, बट आई थिंक यू आल्सो थिंक कि रोड्रिगो ऑन द राइट इज नॉट हिज स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन ना? हाँ, रोड्रिगो नंबर 10 और बाबा तेरी आवाज कट रही है. एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर ले. मैं तेरे को दोबारा ऐड कर देता हूँ. बोल एक बार कुछ. हेलो. हाँ अब ठीक है. हाँ बोल. विनी और रोड्रिगो एक साथ खेलते तब दोनों लेफ्ट साइड पे हो जाते हैं, फिर बॉक्स प्रेजेंस कुछ नहीं रहती. अगर जूड रन्स मारेगा बॉक्स में तो ही रहती है. तो सेंटर बैक्स को बहुत इजीली पता चल जाता है कि ये दोनों 1-2s करके बॉक्स में आने वाले हैं. That's true. Okay, fair enough. भाई बट रोड्रिगो का कहने से हाँ बोलो. रोड्रिगो का डिफेंसिव इनपुट ज्यादा है जो होसेलू से. That's also a fair point. देखो मुश्किल तो है यार टू चूज अ लाइनअप फॉर सिटी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आल्सो डोंट नो व्हाट लाइनअप सिटी विल आल्सो गो फॉर. उनके पास भी बड़े ऑप्शंस ऑल्सो इफ यू कंसीडर कि चलते अगर होसेलू रख रहे तो हमारा राइट विंग पूरा हैंडीकैप्ड है. Rodrigo can still move for the right side. Can Fede not take care of the right wing? But preliminary he won't be taking that position. No. Rodrigo will start that right wing पे कर रहा है. Then he can drift that way. सौरभ says Rodrigo UCL में नूडल है, रोनाल्डो है भाई. हाँ fair enough भाई, fair enough. Guys मैं फिर से कह रहा हूँ चैट में अगर कोई मीन हुआ ना, apart from like Discord members के internal jokes I still understand, but if anybody else is mean for no reason मैं ban कर दूंगा सीधा. Okay. Now अगर तुम लोगों का 15th होता है, it is possibly the hardest possible route. You have to of course beat City. अगर आर्सेनल मिल गया I'll say your semis are still easier. अगर बायर्न मिली again a tough game. हमारा side of the bracket is very very tough. But I think I'm actually excited to face the best EPL club. Yeah. In semi-finals. Best EPL club. अच्छा you mean City or Arsenal? Arsenal in semi-finals. शांतनु का कंटिन्यू मैं जोक मार दिया, मेरा हो गया. हाँ शांतनु तू बता क्या तेरा हमारा. I think if we beat City we will win the UCL 100%. 100%. अगर हाँ I also sort of agree with that. I think if you beat City तुम्हें लगा अब कोई और सामने आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. But you still think शांतनु, तूने क्या बोला था, सिटी फेवरेट्स है या मैड्रिड फेवरेट्स है? सिटी फेवरेट्स. You think City are favorites? Okay. Aggregate बताओ मुझे तुम दोनों कि क्या होगा. पहले वकार भाई aggregate for City Madrid. 5-3 Madrid. 5-3 Madrid. How first leg बताना एक बार. First leg 2-1 City. And first leg 2-1 City, and you think you're going to do a comeback at the Etihad? Yeah. Damn. Okay. Then Etihad पे you mean 4-1 होगा फिर. Okay. But पैसे नहीं लगाऊंगा. हाँ पैसे मत लगा. That's what I'll say. शांतनु. बर्नाब्यू पे 1-1 और एतिहाद पे 4-2. 4-2 Madrid. 4-2 sounds like City.
4-2 Madrid या 4-2 City? Shantanu? 4-2 City. 4-2 City. Damn. So 5-3 टोटल एग्रीगेट होगा. शांतनु डाउन प्ले कर रहा है. अयान का क्वेश्चन है, तुम दोनों बारसा PSG का एग्रीगेट भी बता दो, सिर्फ एग्रीगेट. वकार भाई 6-3 बारसा. 6-3 बारसा अगेंस्ट PSG. डैम. शांतनु 5-2 Barca. 5-2 Barca. 5-2 Barca. If you okay, let's say hypothetically, last question, let's say you guys don't win it, who do you want the Champions League? Like तुम क्या चाहते हो, कौन जीते Champions League? Arsenal. वकार भाई wants Arsenal. शांतनु और Atletico. Atletico. Fair enough. Arsenal because I hate all the other clubs. You hate all the other clubs. Fair enough, भाई. Fair enough. ठीक है भाई. Thank you so much both of you for coming in. We'll run through the other ones. Thank you so much, bhai. Thank you so much. Vakar bhai, always nice to have you. Always nice to talk to you, bhai. And Shantanu bhai, what a moment, man. मेरा channel अब मतलब blessed. Channel is blessed. Shantanu ने फिर से प्रकट होके अच्छे से बात कर ली. Always nice to have you, buddy. If not for Shantanu, मैं भी नहीं होता. है ना? देखा शांतनु के आते ही भाई. शांतनु के आते ही हो गया. चलो, I'm gonna remove you guys. Next year we are going to get Raghav, because Raghav's been here for a while and Raghav keeps getting disconnected. Raghav, then Ankush bhai, then Ayush, then Abhyudaya, and then Dabbu. Cool. And iske baad I'm not adding anyone, so please don't join iske baad. Raghav, are you ready to unmute kar de apne aap ko? Okay, Raghav. All right, Raghav. Hello, Daksh bhai. Am I audible? Yes. Oh, amazing. Great audio. Raghav, how are you? What's up, bro? I am happy, excited, and I am honored to be at this stage, be it this discussion or Champions League quarterfinals. Fair enough. And thank you so much for joining in. Always nice to have members on. And thanks for supporting the channel. Raghav, of course, from your picture, I can confidently say you're an Arsenal fan. Yes. Bayern Munich versus Arsenal. How are you feeling about this draw? I mean, if this was, I think last year, I would have clearly said Bayern jeetne wali hai. But this year, Bayern is not playing that well. And we have a momentum going. We have the mentality. We actually can do this. I have a feeling. Be it from set piece, a goal, but whatever, we can actually get it done. And Saliba and Gabriel the hai. That's true. That's true. या यार एक चीज है यार कि देख अभी हमारा एक बहुत डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स आने वाले हैं. हम पहले सिटी को भी खेलेंगे, फिर हम दो ब्राइटन को खेल रहे, लूटन को खेल रहे, फिर हम बायर्न से खेलेंगे. एग्जैक्टली दैट्स द एग्जैक्टली कंटिन्यू. हाँ, उसके बाद आई थिंक वी प्ले विला इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एट होम. यस करेक्ट. यस विला एंड आफ्टर दैट आई थिंक इट इज बायर्न अगेन. बायर्न अवे. So this is my concern. This is what I was worried about. The first thing I did after watching the draw was I checked our schedule. और भाई it is jam packed. That's the one thing I'm worried about. अभी international breaks, काफी सारे Arsenal players जा रहे हैं international break पे. Then they come back. We face City, and even after that, जो April है, all throughout the April it is jam packed, and we have to win every single match. So हमारे main players they don't have time to rest. And after that, we are playing Bayern Munich, and if somehow we get through Bayern Munich, भाई हमको खेलना पड़ेगा मैड्रिड या मैनचेस्टर सिटी को, और वो भी एतिहाद या बर्नाबाउ पे सेकंड लेग. तो मतलब हम 14 साल बाद क्वार्टर्स पे, एंड दिस इज आवर रिवॉर्ड. बायर्न म्यूनिख, वन ऑफ सिटी एंड मैड्रिड, एंड उन सब को भी पार कर लिया. ऑन द अदर साइड दस PSG, बारसा and Atletico या Dortmund में से कोई. And but एक चीज होगी, if we can do it, and we can do it, our team is capable, Arteta is capable. If we can do it, भाई nobody can question Arsenal. Nobody can question this team anymore after that. That's true. Who do you have as favorites for this? देखो, एक तो Arsenal fan bias आता है, but bias को हटा दो. Let's respect Bayern as well. Who do you think are favorites for this time? Is it Arsenal based on form, or Bayern Munich जिनके पास एक अच्छा कोच है, एक अच्छी हेरिटेज है? Do you think experience Bayern? Yes, experience, of course.
See, it depends. अगर आर्सेनल अपने फर्स्ट लेग में if they get a good result, then भाई it is Arsenal. No Good Arsenal result. bias. But अगर आर्सेनल ड्रॉ भी खेलती है तब भी then I would clearly say it is Bayern Munich because second leg में I really don't see much happening. So first leg में अगर आर्सेनल निकालती है then भाई obviously Arsenal. Otherwise could be Bayern Munich. No, that's fair enough. But when you say we need a good result in the first leg, what is a good result? What is a good result? I would say 2-0. I mean, preferably then obviously 3-4. But realistically, I would say 2-0. Realistically, yes. We need a 2-goal lead. Why? Because अगर हमारे पास 2-goal lead and even if we concede एक in the second leg or match शुरू होते बराबर in the first 20-25 minutes, we can go crazy defensive. भाई अब तुम टॉमियासू को लेकर आ जाएंगे, पार्टे को लेकर आ जाएंगे. We can go very defensive. And we will just focus on defending and अगर हो सके तो सेट पीस से एक गोल निकालना. So that's my 2-goal lead. एक अच्छी न्यूज ये है कि कॉन्वेंट्री हैज क्वालिफाइड फॉर द सेमीज ऑफ द एफए कप. देव बीटन वुल्स. तो वुल्स वाला गेम पोस्टपोन नहीं होगा, थैंकफुली. थैंकफुली. एक चीज मुझे तुझसे बात करनी थी कि पोर्टो के अगेंस्ट बोथ टीम्स ओनली मैनेज टू स्कोर 1 गोल, राइट? पोर्टो ने फर्स्ट लेग पे मारा था, एंड में हमने एक गोल मारा. चल एक डिसअलाउ भी हो गया था. But what do you think we have to do different from Porto game? Or do you think हमें कुछ ऐसा खास different नहीं करना है, बस Porto बहुत defensively खेलती है, Bayern ऐसा नहीं खेलेगी? Exactly, that's my point. Because Porto were defending for their lives. As if मतलब वो लोग I don't know what they were playing. वो उनको बस बॉल रोकना था कि आर्सेनल आगे लेके ना जा पाए. I think you have said it, someone has said it. The only way to stop Arsenal is not let them play football. That's true. And that's what Porto was doing. And I don't think Bayern Munich वो करेगी. I do not think. But that's a very good team and they have very good players, class players. So भाई वो अच्छे से they will press quite well. And Bayern will try to score goals and that's where we can hit them at counter. And if Martinelli is available, then तो भाई Martinelli, Rice, Odegaard, Saka, तो we know what happens next. Oh, fair enough. Are you worried about any Bayern players? And if you are, give me 3. I am always worried about this one player known as Thomas Mueller. मेरे को वो बंदा, that guy always haunts me. And also मेरी second जब उसने वो वीडियो निकाली, what did you feel? I was refreshing my Instagram waiting for Thomas Mueller video. And as soon as I saw it, I was like, yep, there it is. So that guy always haunts me. And obviously, मेरी Barcelona is my second team, at heart. So that's also a reason. But मेरा तीन players would be Thomas Mueller. I would say Musiala and Harry Kane. Very tough, yes. And Harry Kane. Because Harry Kane always scores at Emirates. Bhai, he scored 14 goals against Arsenal. Bhai. Exactly. देख, एक तो यह बताओ क्या ये बायन वाले टाई की एक चीज है. नंबर 1, ऑफ कोर्स बायन फैंस आर ऑलरेडी गोना बी अगेंस्ट अस. ऊपर से स्पर्स फैंस विल बी वेटिंग फॉर अ हैरी केन नॉकआउट गोल. ऊपर से चेल्सी फैंस विल बी वेटिंग फॉर अ थॉमस टूकल विन ओवर आर्टेटा. तो यार वी आर बेसिकली फेसिंग 3 फैन बेसेस इन दिस. ठीक है, सारे आ गए. 3 अब्दुल्ला आ गए इस शादी में नाचने के लिए. But definitely, yeah, but how do we stop? Do you think we have stopped Harry Kane before, right? Gabriel has had his number for a while. Yes. Harry Kane definitely Gabriel के pocket में रहता है. How do we stop them? Yeah, how do we stop them? जैसे you said, Kane, Musiala and Muller. How do we stop them? Which players will be responsible? Yeah, biggest players for our team who are going to be responsible for stopping them. Saliba, Gabriel, Declan Rice, and either Jorginho or Thomas Partey. मैं बोलूँगा Jorginho. I don't know. I like Jorginho, the way he controls the midfield, the way he don't let other team walk through us. I think I have faith in Jorginho. So मेरे हिसाब से तो Jorginho, Rice, or obviously the 2 center backs, the goats. Okay, yeah. If I had to ask you the starting lineup, what would be your starting lineup, assuming everyone is fit and ready? Assuming everyone is fit, Raya at goal, Saliba and Gabriel at center back. Left back, यार मेरे हिसाब से तो I would play Tomiyasu. Okay, Tomiyasu and against Sane और Koman या Gnabry जो भी खेलते हो swing पे. Yes, and right back is obviously the Ben White. Okay. Midfield में I would say Declan Rice, Martin Odegaard,
and I would play Jorginho because obviously I like Jorginho. And then Evan front, wanted to play Partey, if I remember. Yeah, Evan wanted. exactly, and that's a good point. The point he made for Partey was good. बट मेरे हिसाब से जॉर्जिनो खेलना चाहिए क्योंकि जॉर्जिनो उनको बचा सकते हैं. थॉमस Yeah. पार्टे अभी उतना ऑल्दो ही इज वेरी गुड बट अभी उतना खेला नहीं है रिसेंट टाइम्स में, तो थोड़ा मुझे मतलब थोड़ा उसका गेम ऊपर नीचे लग रहा है, विच इज मतलब नॉर्मल आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी. सो इसलिए मेरे हिसाब से जॉर्जिनो शुड प्ले एंड फ्रंट थ्री तो ऑब्वियसली शुड बी बुकायो साका, मार्टिनेली एंड सेंटर में काई हैवर्ट्स goes again 60 million down the drain. That's fair, yeah. 60 million down the drain. Hopefully Kai Havertz scores again. All right. And Raghav. Mueller wait कर रहा है ना इसका. Oh, Mueller is definitely waiting. All right. Give me. I would love a Havertz goal. Yeah. Yeah, I'd love a Havertz goal. Give me the aggregate and who would you want to face in the next round? Aggregate of Bayern. Our aggregate would be 3-1 to Arsenal. Okay. Where we would score, the first leg score would be 2-1, and obviously Arsenal being Arsenal, last 15-20 minutes में goal खाएगी. And then we would sweat out for the last 20 minutes. And then second leg में ये होगा, we would play defensively. We would try to score, नहीं कर पाएंगे. They would have very good chances. Raya would save it. They would miss one or two chances. Harry Kane would miss. Yeah. And then set piece FC corner से goal आएगा, corner से Gabriel Saliba header straight, and we would go to the semi-finals. Nice. That's happening. And who would you want to face from Madrid and City in the next round? Yeah, I would say Manchester City, even though they look a little bit stronger, but we know Man City and Madrid being Madrid, like Real Madrid, Champions League semi-finals, second leg Bernabeu. That is just too much. True. Yeah. I don't want to see that. I don't want to face that. It is the devil we're familiar with, right? It is the devil we're familiar with. So, मतलब वही है, दोनों पीट सकते हैं हमको, but Man City we know them and ठीक है, Man City से उतना डर नहीं लगता जितना Madrid से लगता है मेरे को personally. Yeah, no, that's fair. ठीक है, thank you so much Raghav for coming in, yaar. Definitely, thank you so much for having me. It was an honor. Always a pleasure, man. Thanks for supporting the channel. See you in the next stream. Yes, of course, bro. Of course. Thank you so much for joining in. Chalo, bro. Chalo. Come on, you Gunners. Come on, you Gunners, bhai. Ankush bhai, you're up next. Iske baad, Ayush, I'll need you to turn on your camera, brother. If I have to get you on stage. Ankush bhai, are you ready? To unmute kar do apne aap ko. Otherwise, I'll get Ayush on. Ankush bhai is also ready. Damn. Yeah, I'm ready. Damn. First of all, bhai, clip this. This is how handsome our members are. Look at that jersey. Look at this man sitting in the US. He said, "मैं उठा हूँ अभी." This is how he wakes up. मैं अपनी एक्चुअली मासी के घर आ गया था because I thought Madrid गेम के बाद करना है, तो रात को मैं मासी के घर आ गया, so I was like, no, I'll just stay here. थोड़ा अच्छा घर का खाना मिल जाएगा. No, that's fair. Ankush bhai, first of all, of course, United isn't there, but you have an FA Cup game against Liverpool. Yeah. How are you feeling about that one? I'm not that confident, honestly. I would have been confident अगर हम, हमारे run of fixtures जो पहले चल रहे थे, December से we were unbeaten in 2024. उसके बाद से अगर हम वैसे ही चलते रहते, we would have got Martinez yet, we would have had Højlund की injury ना होती, तो it would have been like, I would have gone a bit more confident into the game, but abhi it's a bit dodgy. I know players are coming back, Maguire aa raha hai, Van Bissaka is there, so we wouldn't have to, hopefully we wouldn't have to see like Amrabat or what's his name, Lindelof on the left back. We can probably shift Dallo there and then have Van Bissaka play on the right, and then Højlund up front might also be back. But ये सब injury के बाद आ रहे हैं, like Van Bissaka is probably playing after so long, so even if we're having players back, it's like ठीक है. I just hope we compete. Like, I don't want us to just give up. Like, I know. Yeah. Just compete. Just show some character. That's it. Like, really, that's it. No, that's fair, yaar. Look, I know a lot of people will not give United any chance for this fixture. Tanish ne bhi sahi kaha. Mount is also, I think, coming back. But if United have to beat Liverpool, who are the most crucial players for you? Garnacho is there. Is Rashford, is this his redemption finally, or somebody else? Rashford pe, he's not only Rashford. I think
our squad, like 60 to 70% of people are moments kind of players. Like एक Right. moment produce कर देंगे out of nowhere and you'll be like, oh no, that's just crazy, right? Bruno का भी ऐसे ही एक you know worldy pass, he'll just play it to Rashford and Rashford will just finish it. So I do feel like we can have that kind of moment. Like एक और दो ऐसे moments आएंगे जरूर. We'll probably take advantage of Højlund. I don't know if he'll start Højlund. I think he might come off the bench. He might play Rashford. And Old Trafford factor? Old Trafford. Did you see the last game against Everton? It was Yeah, like but that's Everton. the crowd was dead, absolutely dead. Like you know, I mean, बहुत बार ये बात होती है, आप किसी भी लिवरपूल फैन को पूछोगे कि Anfield is a factor. Anfield, like the crowd is a factor only if you actually give them the energy, right? Like you can't expect just the crowd. Yeah, of course, like crowd भी करेगा शुरू में, but like It if is you a don't derby. keep up with the It game, is you a know, derby. slowly the crowd will die out. Like the noise will die out. You'll only see Liverpool. If it 2-0 down in like 25-30 minutes, you'll only hear Liverpool fans with that like chants or whatever. So it can like really come down real quick. So अगर हमें crowd Old Trafford को factor बनाना है, you have to start with the team. That's वकार भाई कह रहे बस अंकुश से शाउट आउट मिल जाए एक इमेजिन शेयरिंग स्क्रीन विद शांतनु एंड गेटिंग शाउट आउट फ्रॉम अंकुश भाई एक शाउट आउट कर शाउट आउट वकार भाई डन okay give me a starting lineup for this game against Liverpool. How would you line up? Let's go. I think we're gonna have to start Bissaka on the right. I want to see Varane. I want to see I'm gonna go Johnny Evans. Just stay consistent with people who have been playing. Okay. Varane and Johnny Evans. And then Dallo. I do not want to see a 4-man midfield. Let's go a bit confident. Let's go like Cassie, Menu, and Bruno. Big Cassie, game for Menu. I know it's a pressure game, but huge, you know we really huge don't game. Yeah. We really don't like Ericsson ko khilana. I don't know. Like I can't start him. I just see कि जो midfield चल रहा है. If it works, fine. If it doesn't, that's also fine. But let's just stay consistent with like whatever midfield we play. Right? Definitely don't want to see McTominay because he loses balls. Like he just loses those like second balls a lot. Fair. So that three, and then up front I'll see. He's not going to start Højlund, so I think he might. It sounds crazy. I think he might just start Anthony, and then Garnacho, and then Rashford. ये क्या है? आयुष says कलोनी ने लिजांड्रो को कॉल किया है. चलो ठीक है, it is what it is. उस पे देखेंगे. अंकुश भाई, the tie of the round in the Champions League for you. Of course, City and Madrid is going to be the closest one. But do you think there's a fixture which you think can get a bit more exciting than most people are giving it credit for? I think Arsenal Bayern and PSG Barca is like gonna be a really good game. I don't know why people are not rating that fixture. Like it's gonna be big. It's gonna be huge. It's gonna be exciting. I think मिल तो गया था तेरे को shout out भाई. अंकुश भाई ने बोल तो दिया था क्या? हाँ बोला तो shout out वकार भाई. See, he got a second shout out also. ये trick थी. हाँ, anyway, sorry. Please continue. So I think PSG Barca is gonna be a really really good tie. Like I'm really looking forward to that. Who do you think has the upper hand in that one, Barca or PSG? I think Barca, just because of the experience they have in the midfield. Like they have Gundogan, they have people like Gundogan. That's true, man. Gundogan built for these moments. Exactly. I just don't see that kind of experience in PSG's midfield, to be honest. Like, they have Zaire-Emery, Vitinha, but they're too young, man. They're exciting, they're talented, but you know they're still young. So I don't know Barca के injury issue क्या होगा by that time. If Frankie De Jong comes in like that will also. अंकुश भाई shout out दे दो says आयुष भाई membership chat use कर लिया बंदे ने अपनी. Shout out आयुष भाई. Shout out Ayush. All right, Ankush bhai, give me the score for Liverpool United and give me the score for PSG Barca.
Liverpool United, I'm gonna go 3-1 Liverpool. I think we Damn, score back your first. team, Ankush bhai. Come on, they can't have broken you this much. They have. You have no idea. टूट गया हूँ मैं. I think we score first and then we kind of like. Then I just have. United, yeah. We, And then we give score me, first, we get the crowd going, and then you know how we usually do, just give up leads. yeah. We've given up 2-0 leads. We've given up like one. Like it's been a season to forget, to be honest. I hope maybe injuries se log वापस आए. Licha comes back April, I think March end he's coming back. Abhi bhai, I'm so sorry आपकी membership chat नहीं. First of all, thank you for being a member for a month. Why does no one talk about PSG pace versus Barca defense? Ankush bhai, do you think that's a talking point? I mean, Barca का defense अच्छा है. I mean, it's you're looking from the point of view of last tie, right? You had, I'm sorry, like they're legends, but they were oldies at that point. PK, Alaba. So now you have like Araujo, अच्छा है physically. He's also, you've got Kunde, so you know, be confident. You've got some young people like Kubarsi coming up. So I think yeah, that's a shot. Give me the aggregate. Give me the aggregate for that game. Barca PSG. I think it's gonna be a close one. I think it's gonna be 5-4 Barca. Barca makes the comeback. 5-4 remontada again against Lucho bhai. मजे आएंगे. ठीक है यार, अंकुश भाई, thank you so much for joining in. Thank you for having me, man. Yeah, always nice to have you. Thanks for supporting the channel. Ankush bhai always regularly contributes through super chats. Is a long time member. Is also on the Discord. Perfect member, man. Perfect. Thank you for having me. Bye-bye. Of course. Thanks, Ankush bhai. Okay. Guys, जैसे हाला मड्रिड पूछ रहे हैं, you're a gifted member, can you join? First, you would have had to join the Discord, but अब हमारे पास last 3 लोग हैं, हम almost 2.5 hours से कर रहे हैं. I don't think I'll be able to take anyone, but we will have these a little more regularly. ठीक है? So Ankush bhai, thank you for joining in. Ayush, you're up next. Can you turn on your camera, brother? I can't see you, bro. आपको कैमरा एक बार देखना पड़ेगा. On कर दो. Once you're ready, I'll add you. Till then, I'll take some chats. साजिद भाई says love you अंकुश भाई. दीपक कैसे हो? अंकुश भाई काफी mature लग रहे हैं भाई. He is. I'm telling you, my members are both mature and handsome and funny. बट कुछ लोग डर जाते हैं, जैसे हैं हमारे एक रेनेसू करके हैं मेंबर. वो आते हैं चैट में मचाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं. आयुष भाई, ट्राई एंड फिगर आउट योर कैमरा. आई विल वेट फॉर अनदर कपल ऑफ मिनट्स, अदरवाइज मैं अभ्युदय को ले आऊंगा. Ankush bhai is the cool uncle. Oh man, he's cool. I don't call him uncle though. For Bayan, there is no cup left rather than CL, so they will go all out in heart. Yes, brother, I agree. Leo, I am finding. All right, Abhyuday, are you ready? Oh, you are ready. Perfect. Abhyuday, just say something. Yeah, am I audible? Yes, perfect. Abhyuday, if I'm not wrong, you're a Bayern fan, right? Yes, I am. Yes. Abhyuday, I know on an Arsenal channel, सब लोग बोल रहे हैं Arsenal जीत जाएगी, Arsenal ये कर सकती है, Arsenal के पास edge है. Do you feel disrespected, Abhyuday भाई? नहीं, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि Arsenal जीत जाएगी. Abhyuday भाई, I expected something else from you, but go on. See, like Tuchel ने इस सीजन हमारे को बिल्कुल toothless बना दिया है. Like, okay. Have you seen Bayern of 2020? Bayern like, what? Have you seen the Bayern of 2020? Like the season COVID we won year, UCL. the Hansi Flick year. Yeah. We were ruthless on transitions. Like you lose the ball in the defense, bam, goal. And this season we have been pathetic, toothless. Yeah. We do like useless passing in the final third and lose the ball, especially like have you seen the game against Leverkusen? जो अभी हारे थे recently वाला. Yes. Yeah. 3-0. They were targeting Kimmich, regularly targeting Kimmich. And he was losing the ball. Yeah. Okay. Yeah, he was definitely losing the ball. Tuchel के साथ it's not been the smoothest journey. Nagelsmann को बोल दिया था कि dreams of treble are dying, so we have to replace him. Do you think getting Tuchel in for Nagelsmann was the right move? No. It didn't make sense, in my opinion. He was doing all right. Yeah.
But why was he removed then? Why do you think? Board members, there was और like उसके बाद internal तो clash. board members भी चले गए. हाँ, उसके बाद हुआ. Yeah, man. I think it's a bit strange because usually, and do you think it was like ये board members का error था because usually Bayern is always in a dominating position. इतने साल 13 years in a row you won the title if I'm not mistaken. 11. 11 years in a row. Sorry. So Yeah. 11 years in a row you won the title एक Yes. साथ, and इस साल लग रहा था कि यार देखो क्या है. But if you We have think also about been. it, if you think about it, this season भी, I know you're second, but Yeah. Bayer Leverkusen has had to have basically the best season in Bundesliga ever Yeah. to be in this position. Yeah, they've So been unbeaten so far. yeah, they've basically been unbeaten, right? Do you really think it's been a bad season for Bayern Munich? Because चलो ठीक है वो पोकाल से निकल गए थे साब्रुकन से, but otherwise Champions Yeah. League maybe See, you're in the quarters, you're still just behind. see, it's not really bad seeing the results, but Okay. we have been really inconsistent in our results. We have won 8-0, 8-1, then lost to Frankfurt 5-2, Yeah. then Leverkusen 3-0, then been knocked out by Saarbrücken in the DFB Pokal Cup. So that doesn't, matches with the Bayern identity. That is where Tuchel has made us like a joke, I would say. Yeah, you're definitely not happy with Tuchel. But if he gets you into the semis at least of this Champions League, I think that could be at least a good, at least उसने थोड़ा repay कर दिया होगा. I know he's leaving at the end of the season, but that would be something for you to at least cheer about. What do you think is Bayern's biggest strength coming into this fixture? The second leg at Allianz, that's the only thing I'm seeing in Yeah. Bayern's favor right now. Yeah. अगर हाँ आपको वैसे बाय द वे अगर आपको हिंदी में बात करनी तो दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू, वट एवर लैंग्वेज यूर कंफर्टेबल इन. बट सेकंड लेग आलियांज अरीना पे है. मैंने जैसे बोला था कि सिटी भी लास्ट सीजन जब ट्रेबल जीती थी वो आलियांज पे सिर्फ 1-1 ही मैनेज कर पाई थी. बट आलियांज से पहले यू हैव टू कम टू द एमिरेट्स. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर टीम एट द एमिरेट्स? I think we should get a draw out of it. If we do, then we are winning. Then we are If you, going yeah, okay. So you think अगर एमिरेट्स पे एटलीस्ट ड्रॉ निकाल लेती है बायर्न म्यूनिख, देन तो भाई वो लोग सेकंड लेग में तो निकाल लेंगे. Okay. Are there any Arsenal players you're specifically worried about? Martinelli and Declan Rice. Yeah. Martinelli and Declan Rice. Declan Rice तो of course Bayern Munich also wanted at some point. फिर उसका तलीनिया, but वो भी नहीं हुआ. आदित्य पूछ रहे हैं आपसे किम मिन जे getting dropped. What are your thoughts on that? See, that's the problem with Tuchel. He's been on and off with the selections all throughout the season. तो आपको लगता है कि किम अभी वो एरिक डायर को खिला रहा है, डिलिक्ट को खिला रहा है, बट स्टार्टिंग में किम मिन जे एंड डिलिक्ट थे. Sometimes Kim Min Jae and Upamecano. Sorry, Yeah, Upamecano. Delict was dropped for the major part of the season. Yeah. He's been selected recently. And then बीच में आ रहा था कि किमिक एंड टूकल की भी लड़ाई हो रही है. Yeah. अब Muller was also not really. And अब in the later part of the season now, I think Muller is also starting to play a role in the team as well. So you think it's just do you think it's an inconsistent lineup? It's because Tuchel has favorites, or he just doesn't know his best 11? He doesn't know his best 11 yet. He doesn't know his best 11 yet. Okay. अगर आपके पास choice होता to pick who you face in the semis, assuming Bayern go through, would you rather face Real Madrid in the semis, or would you rather face Manchester City? Real. You face Real? Why? Yeah. I see there is a bias that I really loved Bellingham since I've been watching him in the Bundesliga. So I really want to see Musiala and Bellingham sharing the pitch once again. I really you want to, yeah. Okay, for me as an Arsenal fan, which players should I be worried for this Champions League tie? First leg की बात कर रहा हूँ, and give me your lineup for the first tie. My lineup, like, see, you should be worried about Kane. It does make sense, So
like Neuer at the back, between the post, and Kimmich right back. I will go with do I count in the injured ones? Like, will they come आपके back? हिसाब से मान लो सब लोग फिट हैं and ready हैं. So Davies at left and Delit and Kim Min-jae. I will go with Kim Min-jae. Kim Min-jae, Davies, Kim Min-jae, De Ligt in the center, Davies on the left. Yeah. And Keeper Neuer, of course. फिर midfield? Kimmich at right back. Yeah. Kimmich at right back. And midfield, Pavlovic. Yeah, Pavlovic. very good player. And Muller, Musiala. Gnabry on the left. Sane on the right and Kane on the right. Kane on the That's a very strong lineup, man. That's Abhyuday. That's a very strong lineup. Okay. On paper, we are beating them, but yeah, reality, on paper it is, but Tuchel has to play the right way. I think that's what he has to choose the right lineup. Yeah. Because if he chooses the right lineup, you're confident that you can beat us, and that's fair, bhai. That's 100% fair. Give me the aggregate of this tie. Like what I want or what I think What do you it think? will be. What do you think? Want तो यार हम सभी चाहते हैं अपनी टीम जीत जाए यार 10-0, 20-0, whatever it is. What do you think will happen? And you can be as brash, as biased as you want. That's completely fine. I think it will be 3-0 Arsenal. Over the entire 2 legs? Yeah. 2-0 at Emirates and 1-0 at Allianz. Okay, Abhidya. That's fair, bhai. But like I said in my video today as well, Musiala, Pavlovic, Sane, Gnabry, Coman. Do you think Coman will be fit? No, he won't. You don't think Coman will be fit? It's like the news is saying like early April, but like. हाँ, मतलब fit होना and match fit होने में difference तो आता ही है. Bhai, everyone in the chat, please write big W's for Abhyudaya. He's been on the channel for the first time. You've just joined the membership, in fact. Yeah, आपको तो yesterday. कल ही मिली थी membership. Yeah. On the stream, like just before the draw. Yeah, so 100%, man. Please write big W for Abhyudaya. Look, it's his opinions, whatever his opinions are. It takes courage to come on, but thank you so much, Abhyudaya, for joining here. Yeah, thanks a lot. Thanks a lot. Always a pleasure. Always join whenever we have these, okay? Yeah, sure. Chalo, thank you so much. See you. Okay, Ayush, are you ready? Thumbs up kar de. Perfect. How are you, bhai Ayush? Hello. Nice to meet you. Nice to meet. हाँ जी? नहीं कुछ नहीं अच्छा वही बोला. Okay. Abhyudaya, I know you want to wear a mask and everything. But then if you can bring your camera closer, it's better because आपकी voice फिर muffled सी आती है. So say something again. अच्छे से वही बोला. थोड़ा सा यार muffled आ रहा है आवाज Abhyudaya. Abhyudaya, Ayush. Is it possible for you? Okay, why don't you turn off your camera and take off the mask? Hello? Oh, okay. I don't think he's here. Maybe he'll join again. Alan Walker or what? Come on, man. Some people, like I said, not everyone is going to be comfortable on the camera. Let's not judge people, please. He is on camera. That is better than 90% of the people. Like, I haven't seen Tracy, right? Ayan ने नहीं डाला था कैमरा. रेनिसु तो आया ही नहीं, right? रेनिसु को बुलाओ, क्या यार आएगा ही नहीं, मेरे को पता है वो. Conrad Leimer यार is a good shout यार. देखो, Bayan has Leimer, Mazraoui, Kimmich. All these guys can play right back. Sasha Bowie, I think, can play right back as well. तो वो तो नहीं है यार. आयुष कह रहे हैं गो करो ना गो. दक्ष भाई क्या हाल चाल? ऑल गुड लाला, आप कैसे हो? डब्बू आर यू रेडी? अनम्यूट कर दे क्योंकि आयुष आई थिंक डिस्कनेक्ट कर गया. ओह भाई, वी हैव द बिगेस्ट बारसा अल्ट्रा. डब्बू कुछ बोल. सुनाई दे रहे? हाँ, अरे वाह, क्या सुनाई दे रहे, मजे आ रहे हैं. और बताओ कैसे हो? तुम बताओ कैसे हो यार. बेलिंगम को बारसा जर्सी में डाल के आगे हो, इसको कहते हैं भाई, दिस इज called not even arrogance, it's called confidence, bhai. So are you as confident about your Champions League tie as well, Dabbu? Yes, एकदम. PSG game we are winning it. कितने से?
फर्स्ट लेग हम हार जाएंगे 2-1. ओके ये अच्छा, फिर सेकंड लेग 3-2. सेकंड लेग 3-2. कितने से हारोगे फर्स्ट लेग? 2-1. एक गोल से हार जाएंगे. एक गोल से हारोगे फर्स्ट लेग, बट सेकंड लेग में तुम 3-2 कम जीतोगे. बैक. हाँ, कम 3-2. बैक. सो दैट विल मेक 2-1 एंड 3-2 कितना हुआ? फिर तो इक्वली हो गया ना एग्रीगेट. ओह सॉरी. ओह मैथ्स डब्बू मैथ्स ब्रदर. नहीं. पहले लेग में 2-1. हाँ तो कितना फिर? अच्छा 5-3. गॉट. फेयर इनफ. मेरी मैथ्स वीक है भाई, मेरी मैथ्स वीक है. और पीएसजी को ये लोग ओवरहाइप कर रहे हैं. क्या उनका कोई प्लेयर ही नहीं है अच्छा, बस एम्बापे अच्छा है उसका टीम में. You're not worried about Zaire Emery, you're not worried about Barcola. रफीनिया है, देख लेगा नीचे जाके. हाँ? बारकोला, कुबारसी, बारकोला, अंबापे को राहो संभाल लेगा. एम्बापे को राहो संभाल लेगा. और कौन है वो, अरे कोलो मुआनी, वो तो स्ट्राइकर ही नहीं है, उसको मैं प्लेयर नहीं मानता. अच्छा तू कोलो मुआनी को स्ट्राइकर नहीं मानता. अच्छा और डेम्बेले? फ्रॉड प्लेयर डेम्बेले. हमारे में भी है एक फेलिक्स फ्रॉड. कोई बात नहीं. अच्छा तेको नहीं लगता क्या फिलिक्स कैन हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन दिस गेम? नहीं, हम क्वार्टर फाइनल जाके 10 मिलियन कमा रहे, उसको थोड़ी देने के लिए. अच्छा टेल मी दिस. अरे नेट खत्म हो गया. डैम. इट्स ओके आई अंडरस्टैंड आयुष. नेक्स्ट टाइम मे बी वी कैन गेट यू ऑफ. देख यार, मेरे हिसाब से मेरा लॉजिक सुन, ठीक है? जैसे किसी ने बोला ली कैंगिन है, अंबापे है, ज़ेर एमरी, बारकोला, विटीनिया, ये सारे लोग हैं इनके पास. तो हमारे पास लेवांडोस्की, रफीनिया, हाँ, लामिन यमाल, फ्रेंकी डियोंग, गुंडोगन, पेड्री, कैंसेलो, कुंडे. पेड्री तो नहीं होगा ना यार? ना, पेड्री शायद आ जाएगा, मैं जितना सुना था. तो शांतनु कह रहा है कि बारकोला, अंबापे और डेम्बेले के अलावा 3 पीएसजी प्लेयर के नाम बोलते. अरे अच्छा कोई जरूरत नहीं. ली कैंग इन. Yes. और एक है फाबियो रुइज. फाबियन रुइज. नूनो मेंडेस. यस, देखा, ये होता है भाई शांतनु के मुंह पे तमाचा मारना. भाई शांतनु के मुंह पे तमाचा मार दिया यार. देख, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी, मेरे हिसाब से, तेरे हिसाब से तो बारसा हैवी फेवरेट है. तेरे हिसाब से बारसा तो पेल देगी पीएसजी को. बट एम्बापे के अलावा फर्स्ट लेग में तुम हारोगे, फेयर इनफ. बट सेकंड लेग में तुम कमबैक कर दोगे. बट इफ आई हैव टू आस्क यू कि पीएसजी के ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं? आई नो तू नहीं डरता है, तू बड़ा निडर टाइप का बंदा है. बट इफ यू हैव टू टेल मी सम पीएसजी प्लेयर्स जो तेरे को थोड़ा सा वरी करते हैं, वो कौन होंगे? एब्सोल्युटली एम्बापे. यस, एम्बापे के अलावा रुइज मिडिल में रहता है. फाबियन रुइज. ओके. हाँ, ली कैंगिन सच में वो अच्छा प्लेयर है. ली कैंगिन एक्चुअली बहुत अच्छा है. और कौन है? एक और बता दे बस. नूनो मेंडेस, वो तो आयन भाई बोल चुका है. तो क्या बता. हाँ, नूनो मेंडेस भी अच्छा प्लेयर है. That's fair. तेरे हिसाब से स्टार्टिंग लाइनअप क्या होना चाहिए इस गेम का? हमारा हाँ, तुम्हारा सेम. राइट बैक कुंडे. ओके. आराउ. फिर सेंटर बैक आराउ. या कुबारसी, उसे रेस्ट दे दो, लालिगा मत खिलाओ. कुबारसी को रेस्ट दो, तो फिर सेंटर बैक कौन? इन्हीं को खिलोगे तुम? नहीं, कुबारसी को लालिगा में रेस्ट दे दो. हाँ, यूसीएल खिलाने के लिए. ओके. लेफ्ट बैक में कैंसेलो. फिर सेम गुंडो और क्रिस्टिनसन. गुंडो पेड्री अगर आ जाए तो उसको ऊपर खिलाओ, क्योंकि वो थोड़ा बॉक्स में जाके अच्छा थ्रेट क्रिएट करता है. नहीं तो फ्रैंकी डियोंग भी आ सकता है. और स्टार्ट ऊपर तो सेम ही है, लेवांडोस्की, रफीनिया, लामिन यमाल, रफीनिया ऑन द लेफ्ट एंड लेवेंडोस्की फॉरवर्ड में. भाई देख, मतलब लाइनअप तो बड़ा सॉलिड है. बट एक, आई वांट टू अंडरस्टैंड योर ओपिनियन ऑन वन थिंग. इफ यू हैड द मनी टू मेक वन ऑफ जाओ फिलिक्स या फिर जाओ कंसेलो परमानेंट, किसको करेगा एंड क्यों? कैंसेलो परमानेंट, एब्सोल्युटली. डू यू थिंक ही इज बीन अ गुड लेफ्ट बैक? राइट बैक भी खेल लेता है, बट हाँ, इतना डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं है, पर अटैकिंग में रहता है ऊपर.
पर फेलिक्स कैसा प्लेयर है, वो हर जगह मुंह मारता है, Felix वैसा has प्लेयर को नहीं चाहिए। but he has experience at the top level भाई। कैंसेलो के पास भी है। हाँ नहीं नहीं, मैं मतलब इस लेग के लिए, आई नो तूने बोल दिया था कि इस लेग में या इस टाइम में फीलिक्स ऐसा ही है, बट तेरे को लगता है जावी उसको खिला सकता है? फेलिक्स को? हाँ तो जावी तो उसको नहीं खिलाएगा ना, वही तो लास्ट में खिलाएगा, 80 मिनट में जाके उसको सब्स्टिट्यूट करेगा रफीनिया को हटा के या फिर लामीन को हटा के। ऐसा ही हुआ था नेपोली वाला गेम में भी। ओके फेयर। नेक्स्ट लेग, लेट्स से यू गेट थ्रू, तेरी प्रेडिक्शन सही हो जाते, यू बीट पीएसजी very easily, you will overrun them, although scoreline whatever 5-3 जितना भी aggregate रहेगा, whatever you said. Next leg में do you have a preference of facing Atleti or Dortmund? Because Atleti भी, जैसे अयान ने भी बोला था, Atleti के नंबर you've beaten Atleti plenty of times. हाँ, एटलेटिक के साथ जावी का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। और would you face Dortmund? डॉर्टमुंड आए तो बहुत अच्छा, सैंचो बॉल, Sancho ball. I love Sancho ball. Right. सैंचो अगर गोल मार के एटलेटिको एंड फाइनल में आएगा, मतलब वही है फाइनल में। हाँ मैड्रिड तो नहीं आ रहा है, ओके केडीबी हरा देगा, सिंपल, सबको पता है। you think KDB, so it will be City versus Barca, or do you think Arsenal or Bayern? City versus Barca, Pep versus Xavi. Pep versus Xavi in the final in Wembley. We will be there. We will be there भाई, we will be there। एक सेकंड रुक जा। विनय भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप यार। अनफॉर्चुनेटली हम ये कॉल थोड़े टाइम में एंड कर देंगे, but thank you for joining the membership. The next time we have it, please do join us on this call in as well. Putting it out there, Atleti have beaten Barca both times in the Champions League, says W Atleti. That's fair, yeah. That's fair. ठीक है, सिटी और मैड्रिड का मुझे एग्रीगेट स्कोर बता, क्या होगा? सिटी और मैड्रिड का? हाँ, सिटी 5-3. You think City will beat them 5-3? Barca, Bayern and Arsenal? Arsenal winning it 2-1. Arsenal are winning it 2-1. And Dortmund and Atleti, so you said who will win? एटलेटिक को गलीज गेम खेलता है, 1-0 ऐसा कुछ। 1-0 होगा over 2 legs। हाँ, that's fair भाई, that's fair. Okay. यार देख, सब लोग कह रहे हैं कि एम्बापे। If you were the coach, how would you stop Mbappe? If you were coach for Barca? क्या ही स्टॉप करना है, मतलब एम्बापे को तो स्टॉप नहीं कर सकते ना, वो तो 1-2 गोल मारेगा ही। Okay. पर उनका बाकी टीम बेकार है ना, इसलिए हम जीत जाएंगे। So you think Mbappe despite anything will score, but it's just that तुम्हारी बाकी टीम superior है, इसलिए तुम उनको हरा दोगे, but you still have to stop him from scoring more than like 2-3 goals, right? हाँ, कुंडे और अरागो है, I think कुंडो और हाँ, okay, that's fair. Are you happy that Xavi is leaving at the end of the season? Yes. Okay, and who should be the new coach? ये तो टफ क्वेश्चन है, अब जिसको भी आना है आना। नहीं, फिर तेरी प्रेफरेंस तो कोई होगी ना, देख कितने नाम आ रहे, नागल्समैन, फ्लिक, डिजर्बी, नागल्समैन नहीं आने वाला, बट फिर भी से कोई एक डिजर्वी कैसा, मतलब ह्यूमिलिएट होता है हर टाइम। ओके तो हांसी फ्लिक, नागल्समैन से कोई एक आ जाए। Hansi Flick, you think a German coach would be better for Barca, right? हाँ, क्योंकि लेवांडोस्की कंफर्म कर चुका है, वो रुक रहा है अगले साल। तो जर्मन कोच को आएगा, फिर सिनर्जी अच्छा बैठता है। ठीक है। So you said Arsenal Bayern में Arsenal will go through, City Madrid में City will go through, and then City are reaching the final, of course Arsenal को हरा के, and you said Atleti are beating Dortmund and you will beat Atleti, and फिर सिटी एंड बार्सा का फाइनल होगा भाई। अमेजिंग यार, थैंक यू सो मच। देखो भाई, सबके ओपिनियंस हैं, आई वोंट टेक दी एल वाली चीज़ें, इट इज़ व्हाट इट इज़ बॉयज। देखते हैं यार क्या होता है, बट थैंक्स डब्बू यार फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे लवली टू टॉक टू यू भाई, मुझे लगता था तू कैसा अजीब सा बंदा है डिस्कॉर्ड पे, बट यू आर सच अ नाइस पर्सन टू टॉक टू, आई लव यू सो मच। चलो बॉयज, मैं भी तेरे को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? डिस्कॉर्ड पे मिलते हैं। ओके,
So guys, this was our call in show. Thank you so much to all the members who decided to join in. देखो मैं सोच रहा था कि सबको लाने का टाइम होगा या नहीं होगा, यहाँ पे तो members इतने आ गए. Always nice to talk to them. It's always nice to also repay the support, man. सिर्फ Discord पे बातें करके नहीं होगा. It's nice कि उन लोगों को लाना भी important है जो चैनल को contribute करते हैं. They should also be a part of the conversation. It should not always be one way. अगर 300 people have been constantly listening, जैसे शांतनु ने कहा, listening to डब्बू. भाई 500 likes हो गए हैं. If you would like to join in on the next call in, I would recommend jaldi join the membership. You can join any tier. You will get access to the Discord. We will have call-ins again. It was a W stream. भाई अच्छा लगा. कैसा लगा मेरा वाला part? बहुत मजेदार. Amazing. A truly, like you would say, a Kai Havertz performance. W stream Ankit, thank you so much, bhai. I love hearing from people. And look, it is a risky stream to always have. तो जिन लोगों को मैं नए members आएंगे, I will ask you to have your cameras on until you've been on the chat for a while. And जिन लोगों को यार देखो, it's never too much to come in and say your heart. And if you don't feel comfortable, we can just have you for 2 minutes, and that's also fine. So join the Discord, man. It's fun. You get to talk to other people, but also now you will be a part of these streams as well. And dekho, football season hai. There's still plenty of things to happen. Title races in all the leagues, Champions League, Europa League, Euros are coming. So I'm sure we will have a lot to talk about it as well. The sports is over. It says, hello Dakshanna, kaise ho? W stream, W panel, man. Shout out to everyone who joined in. Shout out to everyone who contributed. Vinay joined the membership. Ayush joined. Ayush, I'm so sorry. We couldn't figure out your camera today. Next time for sure. Abhi, Ayush, of course, joined the membership today as well. And Ashish for his question. Everyone else, man, thank you so much for joining in. Thank you so much for being patient for so long. I know it's frustrating, but it is what it is. So I'm happy it went well. I hope you did as well. See you all soon. Check out the video I uploaded today. It's about Bayern Munich. It's about my thoughts. But yeah, I know, man. I know. But let's hope people have matured. That is a big ask, but it is what it is. See you all soon. Tata, bye bye. And as always, come on, you Gunners. Bye bye.